Yes, we are going live now. Yes, we are live. Good evening, friends. Here is the uncommon man with uncommon wisdom talking to you all, looking for you all to participate. Right? Yes. So now you start. Hi guys, good evening. You all know my name, alias Common Man. My real name is Sanjay. So there we go. You can call me whatever the bond you want. Ground rules. Please don't call me sir or anything. It's just Common Man. Or if you prefer to call me G, etc. I'm happy with that. I think So maybe you'll have to speak a little louder. sure, I can do Yeah. that. For some people, it'll be difficult. I'm fine, Uh, but network issue for mm, some people. So definitely. अच्छा आज का टॉपिक क्या सेशन क्या है कि बिहेवियर यानी कि व्यवहार माइंडसेट मानसिकता प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के पहले और बाद में हमारा आज भी एक कॉमन आदमी का कॉमन इंसान का व्यवहार और मानसिकता कैसी है बेस्ड ऑन क्या हमारे इंडिपेंडेंस के पहले हमें जो नॉलेज मिली है जो हमें बोलते करें कल्चर में मिला है या हमारी हिस्ट्री के थ्रू मिला है तो उसके हिसाब से आज भी हमारा व्यवहार कैसा है बदला है अच्छा है पूरा है और क्या हम उसे और बेहतरीन बना सकते हैं दिस इज व्हाट इज टुडेस सेशन अबाउट एंड या दैट्स ऑल ये मेरा पहला सेशन है तो प्लीज जरा एकदम हार्ड क्वेश्चन मत पूछना ओके टेक इट इजी ओके देखिए the idea is to interact, uh, यस generate opinions, understand what is the mindset of people, what exactly do they think, right? या So I'm very sure there are not going to be any hard questions, right? Yes, it is just heart to heart. मैं That's सिर्फ what we are doing here. Absolutely, yeah. absolutely. I can see a lot of people joining who are very active. So Ja from Chicago says it is an awesome topic. Thank you. Yes, Judy is wishing you the best in the session. Oh, thank you. Yes, so a lot of good comments are coming through. Um, Yes, so you okay, can start. I think I got the first question, so that will also be part of my introduction. और ये मेरी introduction है. सतीश सिंह जी का एक सवाल है. Hey, Right. Common, what's common in you? देखिए मैं आपके जैसा ही हूँ. मैं कुछ साधारण आदमी आपके तरह. कुछ स्पेशल बात है नहीं. I'm just a drop out from college. मैंने कभी डिग्री वगैरह ये सब की नहीं है. Um, जो सामने अच्छा लगा जो देखा जो समझा एंड सब की तरह मैंने भी सेम चीज देखा बट मेरी समझ थोड़ी अलग से आई एम जस्ट गिफ्टेड या मुझे आई एम कर्स्ड आई डोंट नो बट दिस इज हु आई एम दिस इज व्हाट अ कॉमन मैन इज और मेरा स्लोगन सिंपल है एकदम आई एम यू यू आर मी वी ऑल आर यू यू ऑल आर मी वी आर आई एम अ कॉमन मैन जस्ट लाइक यू और आज का सेशन ये है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस हमें मिल गया उसके पहले और उसके बाद आज भी आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा जो एक कॉमन पर्सन का व्यवहार माइंडसेट और बिहेवियर कितना इवॉल्व हुआ है कि नहीं ये भी दैट्स व्हाट मुझे आपसे सीखना है मुझे आपको कुछ नहीं सिखाना मुझे आपसे सीखना है आपसे जानना है आपका क्या ओपिनियन है ओके आपकी क्या इच्छा है अगर हम जो कर रहे हैं अगर समझो कुछ चीजें जो हमारे अंग्रेजों के जमाने से मिल गई है चलो वट एवर और वो अच्छी तरीके से चल रही है लेट्स कीप ऑन विद इट ये अच्छी है बट इट्स नॉट गिविंग एनी वैल्यू बोलते हैं नाफ एकदम कोई हाँ है ठीक है कोई बात नहीं आई थिंक वी शुड पार्क इट or we should evolve it make it better how we can make it better constructively so it can add value to the nation to humanity, to the whole world. That's what is the session about. Okay, and given that I'm Indian, I have more background of Indian knowledge, so yeah, let's take advantage of and talk about it. Um, that's all. I'm going to start with it. कि देखिए पहले तो मैं disclaimer पढ़ देता हूँ कि see I'm not a specialist or qualified person on any subject matter. I just read news, knowledge, information, just like you from the internet, from newspapers, from talking to people, everything.
and without any prejudice or discrimination of any caste, creed, race, religion, etc. This is just a perception and a view we are talking about, and how we can make things better. Okay, that's what is this all about. Okay, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, रिलीजन तो हमारे पास अंग्रेजों के पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा. It's a good thing to have religion. Also, it is become political at the moment, which needs to be looking at. और ये हम एक बोलते हैं कि ये आप पे और मुझ पे निर्भर होता है कि हम कैसे इसे देखें. बोलते हैं कि छोटी सी कुछ होते हैं, आए दिन हम न्यूज में देखते रहते हैं कि um, कुछ भी फेक न्यूज बना के डाल देते हैं, एंड दैट इज रिलीजन बी पिक्ड अप. इट वाज इट देयर, क्या ये ऐसे ही पहले भी था? पहले भी थे, हम हिंदू मुस्लिम का पहले भी होता था, अंग्रेजों के जमाने के पहले भी होता था, अंग्रेजों ने भी इस बात का फायदा लिया, आज भी होता है, पर आज कुछ अलग तरीके से था. सो यस, इट हैज इवॉल्व्ड इन अ बैड वे, बट ऑल्सो देयर मस्ट बी सम गुड वे. टॉलरेंस लेवल भी है, विजिबिलिटी भी है, ठीक है, वॉट एवर. हम इसे और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? दिस इज वन ऑफ मेनी थिंग्स एक्चुअली, एंड इट्स इम्पोर्टेंट, लेट्स से, task or a topic on itself, you know. Then हमें और क्या मिला पहले से? पहले हम गिल्ली डंडा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, आज भी हम कबड्डी खेलते हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड चैंपियन भी हम ही हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है. और दुनिया पकड़ रही है कबड्डी में भी एक्चुअली. सो kudos to us, हमने कुछ स्पोर्ट्स इन्वेंशन की है और दुनिया सीख रही है उस बात का. What else do we have given? Okay, स्पोर्ट्स नहीं, फिजिकल एक्टिविटी इसी में आ जाती है, ठीक है. We have yoga. आज की तारीख में योगा, लोग अपने आप को योगी बोलते हैं, टाइटल डालते हैं एक्चुअली नाम के साथ, आई एम अ योगी सो एंड सो, वट एवर, पूरा मतलब नहीं चलेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, कोई बात नहीं, वेल कंग्रेचुलेशन, हमने दी है, वी आर प्राउड ऑफ इट योगा, और आगे चल के भी हम बहुत अच्छी बनाएंगे. आज की तारीख में दुनिया के अंदर आप जाएंगे ना, तो देर आर डेडिकेटेड स्पेशलिस्ट, देर आर पीपल हु आर trainers who call themselves, address themselves proudly, yoga trainers. Okay, so this is also a gift from our culture. ठीक है, पहले भी था, आज भी है, और बहुत अच्छा चीज है, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट. जीरो और वन तो सबको पता है, मुझे तो बचपन से पता था कि ये जीरो और वन सब इंडिया से आता है. आप अगर इंग्लिश के नंबर्स लिखे ऊपर, या इंडिया के ऊपर लिख ले, 1 to 10 लिख दे, 9 लिख दे, और नीचे इंग्लिश में लिखे, आपको सिंबल्स भी ना बहुत सारे सिमिलर दिखेंगे, और आप बहुत से अलग अलग लैंग्वेज में देखोगे, तो भी ये हमारे कल्चर से. जीरो हमने इन्वेंट किया. इनफैक्ट एक थियोरी भी है कि जो कॉन्सेप्ट, नेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी हमारे यहाँ से ही आया हुआ है, ठीक है. 100% एविडेंसेस या उसके 162 यहाँ वहाँ का है, बट दिस इज व्हाट आई मीन नॉट. अब आज की तारीख में सब जगह देखता हूँ, वी आर प्राउड इंडियंस, यू नो, why India is so great, actually we gave you the zero. ये मुझे बचपन से पता था, और मैं यहाँ पर लोगों को बताता भी था कि भैया, तू हर बार में हम लोग इंडियंस लोगों को बोलता है ना कि हम लोग क्या इस दुनिया को दिया, हम लोग ने जीरो दिया, उनको शौक लग जाता था कि क्या बात कर रहा, हो ही नहीं सकता. तब मैं उनको बताता कि गूगल करके देख, यहाँ पर भी एविडेंसेस है, ठीक है. आज की तारीख में लोग आके मुझे बोलते, अरे तुम लोग को मालूम, तुम लोग ने हम लोग को जीरो दिया, इस दुनिया को जीरो दिया. ओके, जमाना बदल गया, इट हैज इवॉल्व्ड. Thank you for whoever advertised it, and thank you very much. It does help us and to show that our value in the world. Okay, that we are not just slaves, etc. We are quite intelligent and we are quite capable of it also. Okay, so this is where we are. Now, languages, we have various different languages, dialects, etc. You go, आप एक समझो कि मैं बाय द वे, I'm मारवाड़ी, बहुत लोग मुझे पंजाबी कहते हैं, मैं हाँ बोल देता हूँ, कोई मुझे बोलता है सिंधी, मैं हाँ बोल देता हूँ, ठीक है, जो बोलना है. बाय द वे, माय पेरेंट्स कम फ्रॉम राजस्थान, तो मैं मारवाड़ी. हमारी मारवाड़ी में काफी अलग अलग डायलैक्ट्स वगैरह है, ठीक है. तो इन टोटल इंडिया में लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट डायलैक्ट्स एंड सब डायलैक्ट्स एंड सब लैंग्वेजेस मिला के पहले से भी बहुत सारी थी, अभी भी है, और शायद बढ़ गई रहेगी, ठीक है. बट वन थिंग आई नीड टू नो, चलो लैंग्वेजेस है और हम बोलते करके ये वाली लैंग्वेज ऑफिशियल होना चाहिए, यहाँ आप स्टेट में जाओगे तो यहाँ की ये लैंग्वेज है, वेरी गुड एक्चुअली, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. इफ यू आर इन अ स्टेट, ऑफ कोर्स यू आर गोना स्पीक टू दैट लैंग्वेज यार.
एक लैंग्वेज है इंग्लिश, जो कि हमको अंग्रेजों ने दी थी, ठीक है। नाउ आज की तारीख में भी वो इंग्लिश, एंड माइंड यू, जस्ट फॉर योर नॉलेज, वी इंडियंस, ठीक है, जो अब्रॉड नहीं है, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ, जो अभी भी लोग इंडिया में, वी सी गुड इंग्लिश, वी डू स्पीक गुड इंग्लिश, हमारी एक्सेंट अलग अलग है, डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ पर Absolutely. अंग्रेजों की भी अलग अलग एक्सेंट है, और एक दूसरे से बोलते हैं ना, एक दूसरे की मजाक उड़ाते रहते हैं, ठीक Yes. Very है। true. अब इंग्लैंड बोलते हैं ना कि इंग्लैंड इंडिया के सामने नाखून भर के साइज का है, और इस नाखून भर के साइज में भी अलग अलग एक्सेंट और डायलॉग्स है। लंदन का And even Indian languages also, even Indian languages, after every 100 kilometers, the dialect becomes different. एग्जैक्टली, So naturally English also, but we find the difference in America also, in दैट्स England also, yeah, right? you will also Yeah, Texas. Yeah. everywhere, different accents we find. And even the spellings, the pronunciations, the usage of words, the idioms that they use, everything changes according to the context, the political scenario, the jokes, they change. Absolutely right. Everything. Yes. See, only one thing I would like to express my opinion, मैं थोड़ा stress करता हूँ मेरा opinion इस पे कि see, हमारा जो judicial system है, okay, Correct. judiciary of India, official language is English. English is also the official language of maths and science, ठीक है। Now, बार बार मैं न्यूज में सुनते रहता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि यार ये मुद्दा ही क्यों बन रहा है। सी व्हाट इज देयर, एंड इफ यू कैन इवॉल्व उसको लेके, अगर हम लोग और कुछ ज्यादा अच्छा बना सकते, rather than reinventing the wheel, why don't take advantage of that and move on further and make something better। अब फिर से री इन्वेंट व्हील करोगे, उसमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, और समय, जब से मैं और आप भी निकल लेंगे, फिर बाद में फिर कोई आएगा, फिर कोई नवा अड़ंगा खड़ा करेगा। सो रादर जो है सो है, उसके एडवांटेज लेते हैं ना उसका, और आगे बढ़ते हैं। एंड माइंड यू, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। इनफैक्ट खुद यहाँ पर मेरी एक्स वाइफ गोरी है, वो मुझे कभी कभी बोलती है कि आप लोग जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हो जिस तरीके से, दैट इज मच बेटर देन अ लोकल स्पीकिंग ओवर Sometimes many of the English people, yes, absolutely. The vocabulary is so good because when you know that it's a foreign tongue, you take a lot of interest and you're very particular that you don't make mistakes, right? So here. that has also been our tradition that generally the discipline towards education is very high in India. So Yeah, whatever you learn it perfectly. That is absolutely. also there, at least in most of the people who go to university level, it can be found. Yeah, But you can't help when people in rural areas don't have good exposure to English. yeah, yeah. Yeah, Now, but that happens in any other country also. In absolutely. US also, I find people making so many grammatical mistakes, Yeah, though it is their mother tongue. yeah. And also एक आपको एक नॉलेज देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक बॉस था, Huh. लोकल इंग्लिश आदमी था, ठीक है। तो वो मुझे कहता, मैं उसको पूछता यार कि तू जब ये लेटर वगैरह लिखता है, जैसे ये सब कैसा लगता है, इतना फ्लुएंसी, और जो तू वर्ड्स यूज करता है, इट्स एब्सोल्युटली इम्प्रेसिव। उस Wow. अंग्रेज ने मुझे क्या जवाब दिया वापस है, बोलता बोलता कि बिकॉज आई स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच। उसने मुझे ये जवाब दिया, जबकि फ्रेंच तो दुश्मन है, ठीक है। Exactly. क्योंकि हम Yeah. लोग सार्काज़म में यहाँ पर जब भी हमको गालियां देनी रहती है, तो हम लोग सीधा बोलते हैं पार्डन माय फ्रेंच, ठीक है। अगर कुछ Yeah. अपशब्द यूज करना होता है तो दैट्स सार्काज़म। पर ये मुझे बोलता है क्योंकि बिकॉज आई स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच। सो the way French is structured, it really helps you to speak, communicate, and type and everything। ये इस बंदे का कहना, और तब मुझे मालूम पड़ा कि यार हमने तो इंग्लिश सीख ली एक्चुअली, और बहुत कुछ कर लिया इसके हिसाब से। अब इसकी इसकी लेवल की मैं जो देख रहा हूँ, और इससे अगर मैं पढ़ना, तो मुझे मेरी और लेवल बढ़ाने के लिए मुझे एक अलग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। तो जितना मैंने सीखा, आई एम हैप्पी विद दैट। समझ में आता है, काम होता है, एब्सोल्युटली गुड, बाकी डोरी, ठीक है। एक आपको बता दूं कि आप जब इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो हम लोग बहुत सारे लोग, हमारा वी आर गिफ्टेड विद दिस, ओके, बिकॉज ऑफ अ हिस्टोरिकल थिंग, प्री पोस्ट इंडिपेंडेंस, कि जब भी हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली स्पीकिंग इन अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अ लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और ये जो हमारा दिमाग है, इतना फास्ट उसको ट्रांसलेट और कन्वर्ट कर देता है कि वो जो वर्ड जो है, साउंड जो है, वो इंग्लिश आ रही है, एक्चुअली हम हमारी जो कल्चरल है, जैसे कि समझो मैं मारवाड़ी बोल रहा हूँ, बट द वर्ड्स एंड द साउंड इज कमिंग इनटू इंग्लिश, द कॉन्टेक्स्ट एंड द कल्चर एक्चुअली आई एम यूजिंग इज मारवाड़ी, और ये हम Yeah. लोग बहुत यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप जो कह रहे हो,
सामने वाला अगर वो आपके कल्चर का नहीं रहेगा तो ब्लैंक हो जाएगा। You और won't understand. आप किसी को और को अगर एक्सप्रेस मतलब किसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं ये इंग्लिश में क्या बोल रहा है, आप इमीडिएटली अपने खुद के कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो यो व्हाट यू डूइंग इज you're translating. Try to do equivalent, and for that you'll have to learn and absorb a bit more. ठीक है, और ये इसके लिए टाइम लगेगा. So please, I would say is again with the language, I'm not going to go more on that, but it's a good language. We have already, it has become internationally kind of standardized, recognized. We know English, science, we all love it. I love maths and science, but it's just a one-sided love. Maths and science don't love me back. Okay, so so let's carry on with that. What a judicial system है, बाकी और भी system अगर हो जाए, so it's very good. And plus, it's also becoming a language of trade, by the way. Yeah. Okay, or it has already been formed, unofficially. Um, Now, I would say, okay, that was on so educational system. We have the best educational system. We already know about it historically. History अगर हमारी देखें तो education में हमारी बहुत अच्छी system रह चुकी है. We lost it for whatever, generations of Raj Yeah. and rule and everything and so and so. But now also we do have a good education, but it needs to be better. Okay, it needs to get better. क्योंकि education एक तो सबको मिलनी चाहिए. That's my Correct. personal opinion. और Absolutely. education जो है वो फ्री में मिलनी चाहिए, किसी को पैसा देने की जरूरत Universal free education. Yeah, absolutely. Yes. नहीं है. But I think in India, even the graduate education, except for technical courses, Yes. the way it is so cheap in India, if you compare it to any other country, it is free education. It is Oh, only people who go to, say, private schools, but there are plenty of government schools, municipal schools, gram panchayat schools, yeah. okay, and they are quite very, very, it is free education, you can say. And in municipal schools, there is midterm, mid, what do you call this? Uh, Noon meal is all served in the afternoon. Yeah. Okay, Okay. for all the children. So it could be milk, it could be something like a khichdi, some wholesome food is being given, so Yeah. that children. Now it is so unfortunate that some of my mates were saying, that our children used to get wholesome food when they used to go to school. Now Mm. because of COVID, school has stopped, Yeah. and we are that is something that we all felt. So of course, several organizations, we are all giving food grains and other things to the Mm. poor, Yeah. and see to it that they get healthy food. But Mm. it is many of the children from very small villages used to come to school at least because they would get meal. Mm. In the beginning, that would be the attraction. Then the teachers do a good job and they begin to develop love with the subject. Yeah. So Yeah. that is how it starts, Yeah. you know. See, let me give a bit of my more opinion actually, because I Yes, educated Satish, you said it in properly. Midday meal, he says. Yes. So yeah. I'll just stay in the background. You continue the discussion. So probably people will Sure. join. I'll share the link also. Okay. And if Oh, people want to join, when you want to welcome people to join, you let me know. Then I will share the link. Until sure. then, you can carry on with your discussion. I'm there here only. Of course. Right? Thank you. Yes. Mm. Yes. I'll just look at some comments quickly. Oh, hello Anna, how are you? And we got just right. Great session. Good job. I'm coming. Hi, please. Okay, thank you. Welcome all. Okay, so education पे मैं कह रहा था, देखिए education तो हमारा system अच्छा अच्छा ही है. Okay, it needs to improve and get better. हमें और improve करना होगा या improvement चाहिए. Why? I'll tell you. Okay, ये मेरा opinion और perception है. नंबर एक तो कि देखो कि एजुकेशन मिलता है मगर सबको इक्वली और सेम नहीं मिलता है. ओके, और रीजन इसका सेम नहीं मिलता है क्योंकि डिपेंड होता है कि जो स्कूल में हम जाते हैं क्वालिटी ऑफ education provided over there or that university. Okay, so even that needs to look after. Also, education ठीक है, माना कि अच्छा है, ठीक है, but how we can improve in the sense कि यार कुछ बोलते ना करके बस मुझे एक कोर्स है कि ईयर 1 या ईयर 2 का है और मुझे आज मेरा क्या बोलते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा फाइनल एग्जाम रहेगा और मुझे इतने मार्क्स लाने एंड दैट्स इट, और उसके लिए मैं रट्टा मार लूंगा.
या फिर वो प्रोफेसर रहेगा या वो टीचर रहेगी या वट एवर एक्सेट्रा, या उनका एक करिकुलम है, और ये करिकुलम मंथ 1 से शुरू होगा और मंथ 10 में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बीच में चाहे स्टूडेंट लर्न कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से या नहीं कर पा रहा है, ये कोई वेरीफाई नहीं करता। ठीक है। और एक बात बोलता हूँ, सबका दिमाग और सबकी सोच और लर्निंग करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। सो दिस नीड्स टू बी टेकन केयर वेरी वेल. Okay, I needs to be a bit stressed more on this particular area, and I'm sure about it. There are people working already on it, but it needs to be looked immediately. That's what I need to make a point. Yes, Girjaji, absolutely right. Even the ratio needs to go up, actually, you see. But it's not the ratio, even the quality of education needs to be improving. I'll give you an example where, um, see, whom do you look after, that who's going to give you the knowledge? The person in charge, which is the teacher or the professor. ठीक है। पर यार आप बोलते हैं कि हमें क्वालिटी की हमें एकदम क्वालिटी हाई क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए, इसके लिए हम ये कॉलेज या ये स्कूल में हमारे बच्चे को भेजेंगे या ये कॉलेज ज्वाइन करेंगे। ठीक है। क्योंकि और उस लेवल का हम फीस वगैरह फॉर्म जो कुछ भी है क्यू में जाता है एक्सेट्रा बन जाता है। पर ये प्रोफेसर या टीचर की क्वालिटी क्या है, इसको कौन वेरीफाई करता है? क्योंकि रेस तो यहाँ पर ये लग गई है कि ये साल का ये करिकुलम है और हमें ये खत्म करना है, दैट्स इट। उसके बाद में कितने क्या रिजल्ट्स लाए क्या नहीं लाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर एक और रेस है कि मुझे फर्स्ट क्लास में लाना है, क्योंकि अगर मैं नहीं लाया तो फिर क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और 35 पे भी लाया या 40 पे भी लाया तो क्या फायदा। इसी मुझे कॉमर्स में नहीं मिलेगा एडमिशन, या फिर साइंस में नहीं मिलेगा। you see you rather, if you're keeping these kind of grade system, you mean it and do something about it, or just take off the grade system यार। what doesn't matter, क्या फर्क पड़ता है उससे। क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ कि एमबीए करे हुए लेकर दो दो तीन तीन डिग्रीज करे हुए लोग आज भी दे जस्ट डूइंग एन एब्सोल्युटली बेसिक 9 to 5 जॉब। वैल्यू क्या है उसमें इतना करने के बाद भी? They just in the race. क्या पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे? ओ इट्स जस्ट द सोसाइटी, ओ दैट्स व्हाट दे जस्ट वांटेड टू लर्न। मुझे बस सीखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाद में उसका काम में आ नहीं गया कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो वी नीड टू फिगर आउट कि इसका वैल्यू क्या है इसका एक्चुअली। सी ओके, दैट वाज एजुकेशन। टेक्नोलॉजी, वी आर वेरी गुड ऑन इट। In past we had ancient technology etc. I'm afraid I don't have that much knowledge on it, so I'm going to pass on that क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो फेंकूंगा नहीं। ओके, जितना पता है उतना कहूंगा। टेक्नोलॉजी आज के रेट में we are really good. In fact, we are also considered as one of the best option in the world when it comes to computers, IT technology etc. Okay, one thing I would say टेक्नोलॉजी को लेके, और इसी एरिया में मैं सब्जेक्ट को ढकेल देता हूँ। टेक्नोलॉजी में तो हमने झंडे गाड़ दिए। ठीक है यार, मार्केटिंग और हमारी जो इंडिविजुअल रिस्पेक्ट है, इतना होने के बाद भी उसके ऊपर हम लोग क्यों अपने आप को इतना नीचे दिखा रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी में एवरी वन वॉन्ट्स टू गो टू इंडिया, फाइन। रीजन क्या दिया था? या लेट्स गो टू इंडिया बिकॉज इट्स चीप लेबर। चीप लेबर, आई श्योर वी आर चीप लेबर? क्या हमारी स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं? आप हमारे पास आ रहे हैं हमारी स्किल्स देख के, हमारी कैपेबिलिटी देख के। एंड इफ वी आर चीप लेबर, आपकी पॉकेट में ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो कैसा चीप लेबर हुआ? बस हमें सिर्फ फिर से नीचे दिखाने के लिए किसी ने मार्केट कर दिया कि वी आर चीप लेबर। ब्रो, अगर हम चीप लेबर है, ठीक है, सो व्हाई आर यू सो मच विद अस? No, you're concerned about how much more money goes and stays into your pocket or you save it. That is your benefit and your profit. So cheap labor, सॉरी, डिसएग्री विद दैट एंड आई डोंट लाइक दैट वर्ड। तो जिसने किसने भी, और इसके पर मैंने रिसर्च की थी और मुझे फिगर आउट नहीं किया, मैं आज तक मुझे नहीं पता चला कि ये बजवर्ड किसने स्टार्ट किया और ये कहां से आया। एक मैंने आर्टिकल देखा जो कि इंडिया के क्लोज से आया था। तो भाई अगर हम इतने भी अगर अच्छे हैं ना कुछ चीज में, हमें अच्छे, वी गॉट टू इवन स्टैंड फॉर दैट कि यार वी आर गुड एट इट, नॉट सेल सेल्फ एब्सोल्युटली लो। सामने वाले को जस्ट कि हमें थोड़ा कुछ चाहिए ना, सामने वाले को इतना दर्जा दे दिया, हमें अपने आप को इतना गिरा दिया नीचे। डोंट डू दैट, दैट्स नॉट गुड, एब्सोल्युटली नॉट गुड।
आप बेस्ट भी रहोगे तब भी फिर भी आपको नीचे गिरा के रखेंगे. प्लीज डोंट डू दैट. whoever started with this buzzword, पहले भी हम अच्छे वर्कर्स थे, आज भी हम अच्छे वर्कर्स हैं, और हम अच्छे वर्कर्स थे इसी वजह से राज था, और राज के टाइम पे लोगों ने काफी हम ही लोगों से पैसे कमाए, एंड टुडे दे एब्सोल्युटली रिच. I stay in that rich land. Sorry. Okay, that was technology. Inventions भी हमारी काफी अच्छी है, ठीक है. साइंस वगैरह में, आयुर्वेदा एक्सेट्रा में, we are very good on it and we already know it. It's already been said in that. I'm not going to say more about it. Um, Let me come back to actual the core of this session today. um, देखिए अभी चलो अंग्रेज चले गए, हमें इंग्लिश छोड़ गए पीछे, हम अच्छी खासी बोल लेते हैं. um, कुछ जगह पे कुछ जगह पे मैंने ये नोटिस किया है कि साइड्स बन चुके हैं, और साइड्स के हिसाब से पूरा मैं एक्सप्रेस करता हूँ. पहले पूरी मेरी कॉन्टेक्स्ट समझ जाइए, फिर उसके बाद में आप अपना दिमाग थोड़ा चलाना चालू कीजिए. बीच में डिसीजन मत लीजिएगा, ना तो समझ में नहीं आएगा. देखिए कि एक ये हो गई करके, एक है कि एक एक ग्रुप बन गया है जो बोलता है वी आर इंग्लिश स्पीकिंग, वी आर पॉश. दूसरा है कि यार तू लुक इंग्लिश नहीं बोल रहा है बट टूटी फूटी बोल रहा है, इसकी एक्सेंट देख, ठीक है. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस बिटवीन इट. भैया तू पॉश है, इफ यू आर द पॉश ग्रुप, what makes you better than this who cannot speak as good accent as yours? You see, this is what I don't understand. So from where have this mindset come? ये बिहेवियर और ये माइंडसेट कहाँ से आया, कहाँ से जनरेट हुआ, ठीक है. रीजन है कि ये, मेरे हिसाब से रीजन ये है कि कुछ बोलते ना ये, देखिए राज था, और राज अंग्रेज हमारे पर इतने सालों तक कैसे राज कर पाए, और ये मैंने थोड़ा आर्काइव्स में पढ़ा. Authenticity and credibility of the archives, what I read, afraid I don't know. मगर ये मुझे सबसे अच्छी और बोलते ना कि दोनों साइड देखने वाली नॉलेज मिली है. और बाकी सब मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, और वो तो यार वो इंडिया बैशिंग नॉलेज थी, तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया, ठीक है. पर इस आर्काइव में मैंने पढ़ा था ये सेशन के लिए, और इसमें एक कहा है कि अंग्रेज इतने सालों तक राज कर पाए क्योंकि there were a lot of Indians who rather be under the Raja's rule, they be in the British rule. मतलब वो राजा की गुलामी करने से तो अच्छा हमें ब्रिटिश के रूल के, ब्रिटिश लोगों की, अंग्रेजों की हम गुलामी करें. तो ये डिवीजन, ये जो माइंडसेट है, ये उस समय से चलते आ रहा है, और ये सेम माइंडसेट आज भी है लोगों में, ठीक है. और ये सेम माइंडसेट आज भी है, और एटीट्यूड है कि वी आर बेटर देन यू. पता नहीं किस वजह से बेटर देन यू, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया आज तक, ठीक है. ये बिना मतलब की फेक है. ओके, ये एक मैंने आपको बता दी. अभी इसी पर ही हमें अंग्रेजों ने ये दी. आई दिन मैं सेशंस देखते रहता हूँ, आप लोग भी आते हैं पैनलिस्ट में, मैं भी आता हूँ, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स में हम लोग देखते रहते हैं. और एक कॉमन एनालॉजी मैंने देखी है, और लोग यूज करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है. मैंने देखा कि कॉमन वर्ड यूज है, सर सर सर. दूसरा एक और कॉमन वर्ड है, मैडम मैडम मैडम. व्हाई आर यू यूजिंग सर? माना कि अंग्रेजों ने हम लोग को लैंग्वेज दे दी, मगर हमारी ऑलरेडी हिंदी में काफी अच्छी लैंग्वेज है, या इक्विवेलेंट दूसरी लैंग्वेज में भी काफी अच्छी है. हम लोग जी यूज करते हैं, साहेब यूज करते हैं, ठीक है. um, why are we using sir and madam? Do you know the meaning of sir, by the way? सर का मतलब है, ये मैंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में से लिया है, सो यू कैन आल्सो गो एंड चेक इट ओवर देयर. And let me express you why I'm expressing this, stressing a bit more, because you need to think about it. You need to improve your communication first of all. और मैं जानबूझ के क्यों बता रहा हूँ आपको, ये भी बताता हूँ कि सबसे पहले तो what does the word sir means? Okay, used as a polite, respectful way of addressing a man, especially one in a position of authority. तो जैसे पुलिस वाला सामने आता है, सर 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 सर, या फिर कोई सामने से कोई बड़ा आदमी आ गया,
डायरेक्टली उसको सर बना दिए। तो आपने क्या किया, सर बोल के ऑलरेडी इसको आपने अपने सर पे बिठा दिया है। अब सर पे बिठाए, अब ये इसकी खुद की हरकतें करेगा, ठीक है, जो कुछ भी है, तब आपको बुरा लगता है कि हमने इसको इतनी इज्जत दी, और देख ये क्या कर रहा है हमारे साथ। अरे शुरू में भैया सर ही क्यों बोलते हैं, उसका नाम लेके बोलो या जी बोलो। हिंदी में हमारे काफी है। हिंदी में हम लोग एड्रेस करते हैं, आप यूज करते हैं, तुम यूज करते हैं, तू भी यूज करते हैं, ठीक है। हमें तीन चॉइस है, इंग्लिश में ऐसी कोई चॉइस नहीं है। आप बोलो, यू बोलो, आप बोलो, तुम बोलो या तू बोलो, ये तीनों मिला के यू हो जाता है, ठीक है। भाई जो सर 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 सर, क्या ये, डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ इट एक्चुअली, सर सर। Another way of sir, the meaning of sir, how it is addressed, used as a title before the forename of a knight or a baronet. मतलब ये जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, वो स्पेशल जो टाइटल देती हैं किसी को, नाइट या बैरनेट को, उसके आगे सर का ये टाइटल रखा जाता है, ठीक है। सो ये सर सर बोल के आप कुछ ज्यादा इज्जत दे देते हैं। ओ यू डूइंग इट बिकॉज ऑफ फियर, अब डरते हैं इसलिए आप डायरेक्टली पहले से ही हथियार डाल देते हैं और सीधा बोल देते हैं कि सर बोल दूंगा मैं छुड़ जाऊंगा। और फिर ये आदमी या फिर ये जो कोई भी है, ये सर पे बैठेगा और आपकी ऐसी की तैसी। सेम वे, मैडम, मैडम मैडम मैडम, अरे मैडम, डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ मैडम? आपको पता भी है मैडम का मतलब क्या होता है? मैडम का मतलब, ओके, अगेन इन अ पोलाइट वे ऑफ एड्रेसिंग समवन एंड रिस्पेक्टफुल वे, बिकॉज वी आर वेरी रिस्पेक्टफुल पीपल, राइट। हम लोग सबको एक तरीके से इज्जत देते हैं, तो ताकि बुरा नहीं लग जाए डायरेक्टली मैडम बोल देंगे। उसको जान न पहचान फिर भी उसको मैडम बोल देंगे, ठीक है। Also madam used to address a woman at the start of a formal business letter. Is it really? Freeze, you're absolutely right. Don't forget, yes, boss. ये भी बात सही है, ठीक है। I'll come to that yes, boss thing. Keep hold on that. तो मैडम के बारे में वापस से बोलता हूँ, ओके। ये मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, और ये भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, बाद में यू कैन लुक एट दिस, ओके। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के। आपको तकलीफ है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वालों को जाके धो डालो, ठीक है। एक और है। अब ये मैडम, इस जो मैं अब कह रहा हूँ, इसके बाद अब मैडम अगर बोलना चाहे, या किसी को ऑपोजिट साइड में जो लेडी बैठी, इफ शी विशेस टू समवन टू एड्रेस एज मैडम, इट्स योर चॉइस। मैडम का मतलब क्या, एक और है, अ वुमन who runs a prostitute house, a brothel, is also called a madam. Now, do you wish to call a lady a madam? क्या आप बोलना चाहेंगे मैडम? मैं कभी मैडम किसी को बोलता ही नहीं हूँ। The lady was there. Now I'm using the word the lady. That is more respectful. ठीक है? Not her. गिरजा जी जो थी, not her. That is rude. मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा नहीं हूँ, मैं आपको आपकी माइंडसेट बता रहा हूँ और आपका बिहेवियर बता रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ हम लोग को विरासत में, या फिर हमको सोसाइटी के थ्रू, या हमें स्कूल में जो सिखाया जाता है, it's all bloody botched up actually, and we need to think about for own, think out of the box। इसीलिए मैं कह रहा था, मेरी थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स चीज है। सब अगर एक ही रास्ते से जा रहे हैं, मैं थोड़ा गली गुच्छे में देखता हूँ कि क्या हो रहा है। ये शीपिंग हो रही है, सब एक जैसा जा रहे हैं, और एक बोलते ना वो घोड़े के जो सामने रहता है, ओके, टनल विजन की तरह सब बस यहाँ राइट ट्रैक में। गलत क्या सिखाया जा रहा है, या हमें जो बोल रहे हैं वो सही है गलत है, उसका कोई मायने नहीं है, बस बग देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो मैडम, अब आपको मैडम बोलना है किसी को, बोलो, चॉइस इज योर्स। गुड लक ऑल्सो, उसके बाद में जूते पड़ेंगे, आपकी चॉइस है, ठीक है। चलो ये मैडम भी कवर कर दिए। अब प्लीज बोल रहा था यस बॉस। ये यस बॉस है ना, ये हम लोग मुंबई वाले और बॉम्बे वाले हम लोग की तरफ से ज्यादा करके है, यस बॉस यस बॉस यस बॉस। हमें इसकी बोलने की आदत है, बिकॉज दिस इज मोर काइंड ऑफ ये स्ट्रीट लैंग्वेज एक्चुअली के थ्रू आया है, ठीक है। वे हम लोग बोलते हैं ना, ये हार्ड कोर एकदम हार्ड लोग हैं ना, गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, आज के डेट में गैंगस्टर होता है, उधर हम लोग हैं, यहाँ के भाई लोग हैं। तो ये वहां से ये कल्चर बन के आया है, यस बॉस। इट्स ऑल मेड अप स्टफ एक्चुअली, there's no stuff, there's no such thing actually, okay, this is just a sound slang I would say, or the ghetto style, ये वहां से आया है। Okay, एक हम लोग
इंडिया हम हिंदी में एक बहुत अच्छे हमारे सिर्फ सिर्फ मैंने अपनी लैंग्वेज में देखा, और भी लैंग्वेज में होगी मुझे पता नहीं है, सो आई एम नॉट गोना से दैट। ओके, तो एक और चीज है जो कि हम लोग जो वर्ड रहता है उसके आगे उसको एक्सटेंड कर देते हैं, दैट एक्सटेंशन वर्ड इज कॉल्ड जी। जैसे कि मुझे अगर आई एम नॉट श्योर कि मुझे क्या बोलना चाहिए, तो मैं नाम लेके बोल देता, एंड दैट इज नथिंग रूड अबाउट इट। द लेडी वॉज अवे, गिरिजा जी, ठीक है। The lady comes over here, okay, you all know it, Sonia ji. It's nothing wrong, it is nothing wrong, it is quite respectful, and it is where you're being actually having just a generic conversation. आपको कोई अगर सामने आए, उसको सर बोल के यहाँ पर मत लेके आओ, डायरेक्टली जान ना पहचान डायरेक्टली बोल दिया, और आप कर रहे हो तो ये आपका पर्सनल चॉइस है। पर क्या होगा कि फिर बाद में इफ दिस पर्सन फॉर वट एवर रीजन ही इज गोना डिसपॉइंट यू, फिर आपका वही दिल टूट जाएगा, यार हमने तो इसे इतनी इज्जत दे दी सर बोल के, और ये देखो क्या हो रहा है। हमने तो इसे इतनी इज्जत दे दी मैडम बोल के, और देखो ये क्या हो रहा है। ठीक है, सीएम इज सीएम ओनली, इज नॉट सीएम सर। मोदी इज मोदी जी। तो बाकी सब ये सर और ये सब कहां से आ गए? अरे बंदा प्राइम मिनिस्टर है, एग्जैक्टली द हाईएस्ट टाइटल ऑफ द कंट्री ऑफ द नेशन। जब उन्हें हम मोदी जी कहते हैं, तो बाकी सब ये सर्वर क्या हो रहा है? जी लगा दो, एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट। रीजन मैं इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं कि हमें हमारी वोकैबुलरी, हम जो कहते हैं ना, उसके थ्रू ही हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम लोग पहले से ऑलरेडी और लोगों को अगर काफी औहदा दे देते जो उनकी लायक नहीं रहती है, इट बिकम्स वेरी हार्ड टू फाइट बैक डाउन। आप ये सिर्फ एक बार कोशिश तो करके देखो, एंड यू सी द डिफरेंस। आप आपका अपना ऑफिस का बॉस है, बॉस को भी आप सर क्यों बोलते हैं? फिर उसके बॉस के नीचे एक छोटा मैनेजर रहेगा जो कि वॉट एवर मैनेजर, उसको भी सर। फिर उस मैनेजर के नीचे एक टीम लीडर रहेगा, वो भी सर। आपसे एक सीनियर रहेगा, ये एक मैंने देखी है, वो हमारे सीनियर है ना, तो इसीलिए हम लोग कर दे वो सीनियर को भी सर, और सीनियर को सब कुछ फोकट में मिल जाएगा बना खुना। सीनियर आएगा 9 से 5 की नौकरी रहेगी, 10 पे आएगा, 4 बजे निकल जाएगा, बाकी का सब आप उठाओगे अपने शोल्डर पे। क्यों, किस बात की मेंटालिटी और कहां से बिहेवियर और कहां का माइंडसेट आ रहा है? जस्ट कि वो हमारे से उम्र में बड़े। अरे दैट इज एज डिस्क्रिमिनेशन यार। आप क्या, अब मैंने कल परसों मैंने शायद शायद फ्रीज को किसी ने, फ्रीज ने अच्छा पॉइंट आउट किया था, कोई लेडी थी, आप मुझे सर मत बोलिए, फ्रीज ने बोला था, यू कैन जस्ट कॉल मी फ्रीज। द द द गर्ल एक्चुअली पोलाइटली शी टोल्ड हिम, नहीं नहीं आप मेरे से उम्र में बड़े हैं। ये उम्र कहाँ से आ गई बीच में यार? दैट्स एज डिस्क्रिमिनेशन इफ यू लुक एट दिस, और ये अब तक इंडिया में आनी बहुत जल्दी आ जाएगी। दीज थिंग्स ना, ये बोलते ना कि वायरस के जैसा ये सब सब जगह फैल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, और इट इट डजंट मैटर एक्चुअली। देखो बॉटम लाइन इज दैट कि आप शुरू से ही ना अगर एक साथ में अगर रखते हो ना अपने आप को, तो आपको बाद में अगर ऊंच नीच हो जाती है, इतना टेंशन नहीं होता, एंड यू फील योर इक्वल, योर इक्वल। इस सर मैडम बोल के अपने आप को गुलाम मत बनाओ। मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से गुलामों वाली भाषा है, आज भी ये गुलामों वाली भाषा है। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट। अगर आपने किसी को सर बोला, मैं मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस देखता हूँ, मेरा किसी मैनेजर के साथ टेंशन हो गया, छोटा मोटा मैनेजर था यहाँ पर ही काम करते करते, तो मैंने बोला यार इसको क्या किया जाए इसको। तो मैंने उसको बोला, एक्सक्यूज मी केविन सर। उसकी खुशी देखना चाहिए था उसके चेहरे पे, मैंने उसको सर बोल दिया, क्योंकि मैं तो आता हूँ गुलामों के देश से ना एक्चुअली, तो मैं भी तो गुलाम हो गया। एब्सोल्युटली वो बढ़ गया एकदम चढ़ा चढ़ के, और जैसे ही बोल गया ओए केविन कम हियर, उसको उसकी औकात देखा, तब मुझे समझ में आया कि हो रहा क्या है यहाँ पर। और ये सेम सेम यहाँ पर किसी को अगर सर बोल दिया, फिर वो बाद में तो पहुंच गया कि इसकी तो औकात नहीं है, ये तो रास्ते का बंदा है, मैं इसको जैसा चाहे वैसा इसको ट्रीट कर सकता हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, दिस इज वन मोर थिंग, प्लीज bear in mind how do you speak, and this is going to protect you from equal treatment. Okay, हमारे पास एक अच्छा वर्ड है साहिब, हम लोग बोलते हैं ना साहिब या साहब, but there's no equivalent for lady then. There is no bloody equivalent for lady. Why is that? जानना, that's why I don't prefer, मैं डायरेक्टली एड्रेस करता हूँ लोगों को उनके नाम के साथ, जी लगा दिया आगे, काफी I got special respect for army forces and everything. That's why I say Colonel Dave.
Colonel Dave, because he is a Colonel Dave and it's quite respected. Doctors ko bhi, we just call them by the name. We never say Doctor so and so or Advocate so and so. Actually, no one. No, it's not about respect. It's just those guys they fight for the thing. I'm not. देखिए ये थोड़ा tough है actually क्या ना, so it won't be fair. But this is how it is has been. If there's a better way. Please educate me, and I'm happy to change. I'll evolve and I'll learn from you. Okay. Right. हाँ बाय द वे एक और आपको एक नॉलेज दे देता हूँ कि मुंबई पुलिस को कभी मामा बोलना मत, आपको छड़ी पड़ जाएगी, पीछे डंडा पड़ जाएगा आपके पिछवाड़े के, पता नहीं क्यों छड़ दे उसको, ए मामू जोर से चिल्ला उसके, या मामा जाने दो ना, लग गई डंडा, डंडा तो पड़ गया, पता नहीं उनका क्या प्रॉब्लम है यार, उनका मुंबई पुलिस है आफ्टर, ठीक है. Alright, that's it. I'm going to open up the session. A link will be passed. I'll request Garjaji आपको link देने के लिए. Like these kind of stuff, if you have more to share, please educate me. I wish to learn from you. यार सिखाओ मुझे भी कुछ, ताकि मेरा भी और knowledge बढ़ सके, ठीक है. I'll request Garjaji to post the link in chat room, and then we can kick off. Hello again. Can't hear you, Garjaji. Garjaji, you're on mute. I said I pasted the link. People will be joining soon. Yes, Yeah. pasted the link. Yeah. Okay, see, now, Constable is called Pandu. Absolutely right. Yeah, Tholia. Absolutely right. Absolutely right, Freeze. सही कह रहा है तू. एक और है, अगर आप ड्राइव कर रहे हो गाड़ी में, नहीं यार, नहीं ये लाइव नहीं बोलूंगा, पर हाँ बोलते ना ए पांडु और छुमंतर है ना, इट्स योर चॉइस. हाँ बाद में पिटाई होगी तो बोलना मत. हमने ऐसा कुछ कहा, आई डिडंट से एनीथिंग लाइक दैट करने के लिए, आपकी चॉइस है, इट्स अ फ्री कंट्री. सो ओके, हम ऑल्सो देखिए, ये तो अब क्या है कि मैंने आपको एक बेसिक, मैंने आपको एक बात बताई है कि वर्ड्स जो है, ठीक है, उससे कैसे सामने वाले कैसे अपने आप को महारथी समझना चालू कर जाता है, और उनको ये परसेप्शन कौन बना के देता है, उनका माइंडसेट कौन बिल्ड करता है, ये हम ही लोग हैं, ठीक है, और कोई नहीं है. Who can get the change? Who can do the evolution? Us itself. Okay, smaller change, bigger impact. Okay? Let's try it. एक कोशिश तो करके देखो. Please do share me the results after that once you have done it. I wish to know about it. मुझे feedback बहुत अच्छा लगता है. Okay, एक और चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. लेट्स एक बहुत अतरंगी सवाल है और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा. आई हैव नो इंटेंशंस इन मेकिंग एनी कंट्रोवर्सी या किसी को ऑफेंड करने का या किसका. मुझे एक बात बताइए कि ये ब्रिटिश राज से पहले भी और आज भी होता चल रहा है, और मुझे बचपन से मुझे ये बात समझ में नहीं आई, ठीक है, कि व्हाई डू इंडियन वुमेन, ओके, हिंदुस्तानी औरतें, शादीशुदा औरतों की बात कर रहा हूं मैं, वो अपने हस्बैंड का नाम क्यों नहीं लेती हैं? क्या ये ब्रिटिश ने करवाया था? नहीं, ये ब्रिटिश राज के पहले से चल रहा था और ये आज भी होता है. नाम नहीं लेती है. लव मैरिज हुआ तो ठीक है, ये राकेश इधर आ, पानी भर, वो ग्लास दे, और खाना बना, वो बर्तन घस, ठीक है, लव मैरिज में चलता है, नाम वाम आ जाता है. पर ज्यादातर मैंने देखा है कि अरेंज मैरिज एक्सेट्रा में नाम नहीं लेता है. क्यों? वाई? अरे कल ना घर में आग लग गई और आपको मदद चाहिए, नहीं मैं हस्बैंड का नाम नहीं लूंगी, आग लगती तो लगने दो. दैट्स हेल्थ एंड सेफ्टी यार. ये रीजन क्या है इसका? क्या कोई मुझे एडुकेट करेगा प्लीज? आई विश टू नो. क्या है ऐसा? क्या नाम लेने से हस्बैंड की आयु उम्र कम हो जाएगी? इज इट? अगर ये साइंटिफिकली सही है कि अगर हस्बैंड की अगर आयु कम हो जाती है नाम लेने से, मैं तो बोलता हूं हम लोग सब ना पैसा इकट्ठा करते हैं, बोरिया भर भर के, जितने भी आतंकवादी है उनकी बीवियों को जाके देते हैं, बोलते दिन में 10 बार अपने हस्बैंड का नाम ले, ये ले बोरी भर पैसा, बिना कुछ पत्थर फेंके सब साफ हो जाएगा. okay?
That's my take. Okay. Let me just take some comments. Judy Damley. What is in a name? Name of a thing does not matter as much as the quality of thing. Shakespeare, yeah. Shakespeare says, what is in a name? Rose, if called something different, would still smell sweetly as the name. You're absolutely right, Judy Damley. What is in a name? You know, the irony is that below that nice, funky statement, what Shakespeare gave, that knowledgeable, funky statement, at the bottom it says, dash Shakespeare. So what is in the name of फिर बाद में खुद ही का नाम लिख दिया नीचे. Very clever. Hey, what's up? Love the comment, Judy. I'm so sorry, Girja ji, मैंने आपका spoil कर दिया. Um, okay, Savi Singh is saying, Uncle Ji and Auntie Ji seldom accepted by Indians. They don't want to grow old. I'm afraid I don't understand that, so can't say much about it. Yes, that's absolutely right. श्री गणेश सर, श्री गणेश, देखो मैंने सर बोल दिया, एक पॉइंट मुझे, ठीक है. श्री गणेश भाई, एग्जैक्टली आपका जो कमेंट है, आप कह रहे हैं कि Can you exactly throw same light on this? syndrome, and I feel amazing in it. Absolutely right. You're absolutely right about it. Can I share something? Yeah, See, sure, in the olden sure. days, this was a habit. Now it is reducing, where you don't call your husband by name. Earlier, the marriage or in marriages, always the husband used to be senior to the wife, and probably almost by like 7 years to 10 years. That used to be the difference. Mm, Okay, so it's almost a generation ahead. That was one. okay. So there, and many of the marriages were arranged marriages where you do not know the husband, right? And the in-laws. So their family used to feel that when you call the person by name and you tell some work, it looks like you are giving an errand. You're making so it looks like disrespectful. So the same thing when you say with a different way of calling, it doesn't look like you are assigning an errand. That is how because it used to be joint family, right? So the parents would feel insulted if the wife would call the husband by name. Now nuclear families have started. Husbands themselves start telling their wives, "No, don't call me like that. I would like you to call me by name." They like it like that. But in joint families, still the tradition continues. They don't want. And even if, Oh, yes, say, yes. in many families, there is like when other people come, then you have to cover your face. A lot of such things, even now, prevails in certain parts of the country. They have to cover their head, and Mm, some places you have to cover your face, right? So there are, or you have to yeah. stand up when the in-laws come. A lot of such traditions continue in many parts of the country. Yes. So it is Uh, more out of because of the family construct and the cultural construct, not that there is any other legal implication for it. It's not, but it has been a tradition. And that mm, is, they believe that, okay, the person is elder. So this is the way you, because he's not some official relationship that you would call him sir or something like that. So even okay, before, yes. So it is not that the British came and this was introduced. This has always been there even before the British came, that they never okay, called the husband by name. That is because of the age difference. Age okay. difference and also the joint family. Now it is shrinking. Those habits are now reducing. I think a freeze is there. Shall I add him? Yeah, Yes, sure, I'll sure. add him to the stream. Yes. Yes, freeze. What a He's thing all you right. just picked up. Hello, hi. It Hi. was like Ramu ke Papa. Who's that? Who's Ramu ke Papa? That's me. Yes, Very ये funny point. ठीक है हो क्या? This is रामू कौन है? रामू कौन है? रामू तो वो भी है, रामू ये भी है, रामू सबके पापा. कौन सा Anyway, वाला? See, हाँ also कौन सा the वाला? tradition is like he says, it is so confusing. Like in a house, if there are three boys, okay, and all their children will be named after the grandfather.
So all of them got the same grandfather's name and all of them staying in the same house. Imagine the kind of confusion it will lead to. Yeah. Okay, I wanted to come on the point of in the beginning that you were saying about education, cheap labor. So I thought I would like to come and add something, because once I had gone even on RNS and I had thrown some light, and I had asked her that if possible, please pick up this topic. Now I have a question for everybody, and please till I finish, please listen to me very carefully. Okay, it's my observation, and from what I have seen, and what also full research I've done on everything, comparison from what's happening in India and what's happening abroad. Okay. Now, my first question: what would you like from a parent's point of view? What would you like your son to be? Would you like your son to be a Virat Kohli, okay, or would you like your son to be a lawyer, okay, who's also and even that depends what kind of lawyer. There's this lawyer, criminal lawyer, defense lawyer, divorce lawyer, gay lawyer, wo lawyer. And the reason I'm saying lawyer, because my heart aches and breaks, because I know a doctor and a lawyer, they have to study a lot. The books are humongous. They have to study really a lot of stuff. Okay. Now, the reason I'm saying this, because I think and I feel like the way you guys were saying about the quality and the ratio between the student, teacher, and all that, most of side may separate. First and foremost, I think it's very important. The government and everybody should make sure that politicians are out of owning hospitals, schools. Okay, because I'm telling you, I've done my research. All the private ones are owned by them, and उन लोग धंधे में, Absolutely. उन लोग ने ये चीज को धंधा बना कर रख दिया है. I'm not Correct. joking. ठीक है, you have your discotheque, you have your restaurants, you have your hotels, 5 star, B star. Do that. Don't come into this, and that's the reason. I'll just use one name: Ryan School of International. It's a business. It's a chain from all over India. You know about that boy, that son Pradyuman, who was killed. Okay, it's a very, like, if you dig deep inside, you'll find out what I was in Bombay. I got a legal notice from BJP for writing whatever I wrote. Okay, so that's a separate issue. The point I'm trying to say is become a dhanda. It's become a business of politicians running. Why do you think that instead of improving government schools and government hospitals, these guys are opening their own private stuff, and dhanda, the business starts over there. Okay, what is their first job? They should be in. क्यों गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करने क्या होता है? नहीं, उसमें नहीं करना है. It's the same thing, just the same way we've been now hunting, and the way we found out about Bollywood, front face somebody else, पीछे पैसा इनका है बॉस. ठीक है. If you go into the MCA and find out who's the owner, and what happens with school, the foundation comes again, NGO foundation, uh, all that tax benefit, yay, go, yay. So it's become a business, it's become a dhanda. I'm not joking. You guys need to check it out. Okay. Now, would you want your because of a population? I'll give an example. David Beckham, Virat Kohli. Okay, look at what age they became what they became. Very early, very young. I, for one, when I was working for FTV, as I told you guys, Lalit Modi was my boss. So this is 2006, 2007. And when I saw, for me, it was awesome. मैंने वो after party वो सब बाद में देखा. We all have seen the standard of cricket in India got high. There were so many players that came into the eyes of the people, because otherwise it used to be just that Ranji Trophy, वो भी पूरा झोल है. ओ महाराष्ट्र से आएगा पूरा इधर से. That's why reason why Tendulkar, Prabhakar, Ajit, ये कर, ते कर, वो कर, सब. So it is full setting of theirs. ठीक है? Common man, you know what I'm talking about. So it's like नॉर्थ से हमारे 3 प्लेयर कंफर्म्ड, यहाँ से हमारे 4 प्लेयर कंफर्म्ड, इधर उधर से कुछ बच्चे बुच्चे आए तो आए. मेरे को बताओ, नॉर्थ ईस्ट से अब तक प्लेयर नहीं मिला हम लोग को. We've never seen. Same thing in Bollywood. After Danny Dangsompa, we didn't see anybody. Why? It's a full, that thing is going on. Now, because of a population, and my heart aches when I go outside court, district court, session court, uh, and there are these lawyers. उन लोगों का ना court फट गया है. It's in tattered condition. They cannot, and they're ready to work for $500,000. And I think that's the reason, because पहले से हम लोग का चलते आ रहा था, क्या बड़ा होके क्या बनेगा? इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, बस इसके आगे कुछ सोचना भी नहीं. इतने तो सीधा है, but मम्मी, I'm good at cricket. No cricket. First you finish your 10th, then your 12th, then your TY, then go to cricket. तब तक बचा है क्या क्रिकेट खेलने के लिए? कुछ नहीं बचा.
So there is something called every child has a natural born talent. Okay? Okay? And we all know that. We should recognize that very soon. And that's the reason I was coming to David Beckham and Ronaldo and all. Why? Abroad, even you must be knowing common. Like there is the we have. I think by the primary we should be able to recognize what's the natural talent of a child. Okay? He's good in music, he's good in dance, he's good in sports, he's good in, so that's the reason if you notice abroad, especially America, Australia, ये सब सुनने कर रहे हैं, इन्होंने बताया नहीं बहुत, और मे भी बताया हम लोग ने देखे नहीं पागल की जैसे. So they have the school of music, they have school of football, they have school of blah blah blah, architecture, this. So by the time that child is reached, he is master in that. ठीक है, it is there naturally नहीं, उसके अंदर naturally है. मेरे इसमें music, dance, I was a dancer first, then I became got into music. It was natural in me. But you guys have no idea the amount of times I've been kicked out of my house in the beginning because फिर से बाहर गया तू ये करने. My dad is like, out, you're not out. That's the different thing, whatever happened after that. And it's very funny and strange, like my profession DJing now, आज की तारीख में, if I get one gig, bro, if I get one show, आज की तारीख में, because I'm freeze or whatever, I charge from 40 to 50,000 rupees and I have to play in 2 hours. I think that's quick, fast money, man. Right? Only for 2 hours I get that kind of money. And जैसा नीचे जाएगा जो भी आता है, even मैं बोल रहा हूँ 15,000 या 20,000 भी Indian money for 2 hours is not bad. And we know there are people who work पूरे महीना भर for that kind of People who money. have done engineering are getting like 15,000, 20,000 per month. 20, yeah. And I think it's high time. So But then, there are parents are stuck with this kind of course only will lead you to success. So they Yeah. are not ready to open their eyes to the new options that are It available. will open like how, I'll tell you, Girjaji, when the IPL started, the young guys started getting, and the auction started 1 crore, you go to play cricket now. It's became, I know so many in my own relations. Oh, he's going to play cricket. What? 2 years back, you wanted him not to play cricket. Now suddenly you want him to play cricket. Why? Money, right? Okay. So that is one thing I if on a regular basis, if everybody could pick up, because see, money is also an important factor. आज के तारीख में we have But to that is the understand. same reason why children are also being pushed to perform in, say, reality shows or something, sometimes too early before their age also. So that is also happening on the one hand. So on the It's one hand, happening. That's there that's are another. very And conventional again, parents. Yeah, I had on spoken the one about hand, this there are because that parents who are person's very interest is conventional. into dancing and all that, and next Yeah, day in school he's like, what tired. the Yeah, hell am I doing here? Like, I want to exactly. dance. Okay. Yeah, The other stuff that common man you're talking about is cheap labor. Okay. And I think that's another tricky because it's my yeah. observation. I have a company of my own. So, I'll give one example. Carpentry, Baba. Carpentry. I'm telling you, I have done projects all over India. Hyderabad, that is South. I've done in Delhi. I've done in Nagpur. I've done in Gujarat. ये वो. It's my observation. Carpentry ना यूपी बिहार वालों को टच नहीं कर सकता बॉस. Nobody can touch them. Nobody can touch them. Okay. So it will be the Pandey ji, it will be the Gupta, it will be the Upadhyay, it will be the ye wo. Carpentry is their thing. It is very sad. It is very sad that it's a skilled art actually. Look around you, all of you guys. Tell me there's no carpentry. Just look around. Okay? It's not possible. Carpentry is everywhere. I don't know, and I don't understand why this the art of carpentry is not उसको उतना respect नहीं दिया गया है. If you That notice, dignity of labor is not there. Say, for it's example, not there. Like, the see, electrician in my building, he says, I'm earning 40,000 rupees. But my son said, I don't want to go home to home and then do this kind of work. And he has done his graduation and he's sitting last 1 year without a job, become karke. electrician is on. And this fellow, even though now COVID hai, he is going from home to home. At the age of 65, he is earning 50,000 per month. Exactly. No, that's a At the age of pandemic because the 65. pandemic has come in the middle. So that's the But that happened. That is even the difference. without pandemic become करके किसी को 50,000 per month नहीं मिलने वाला है. That is because बीकॉम करके इधर आधा करोड़ इधर पब्लिक बीकॉम करके रुके लाइन पे. It's like me Exactly. also, That me is why also, it is me like also. you are You know. turning out general graduates like pins. Okay.
Like pins are coming out of a machine. That is how from universities are producing BAs and BComs and BScs, and they are not uh, job oriented courses. Short term courses only to be, they are more useful than these kind of courses. They're Yeah, not yeah, yeah. preparing them for So, any so, job. so, so, what I was saying is like when I went to different areas of India, and when I got carpenters from there, no disrespect, thoda job was not that skilled. Secondly, the attitude. Okay, it's Yeah. like laid back. उसको 9 बजे आना है तो वो आ रहा है 10 बजे. उसको दोपहर को 3 बजे खाना करना तो तैयारी 2 बजे से हो रहा है उसके लिए, and after eating he wants to lie down, whatever. But that's okay, that's a different thing. It's very sad that UP and Bihar hasn't concentrated at the art that they have in them, the two states by itself. It's a huge state, both of them. Even I think Kerala, it's high. Kerala has got beautiful wooden art, Wooden very carving and beautiful. all they do. Yeah, Yes, wooden I carving know and that. all are But so that is a beautiful. different thing. Like even in carpentry, there are, we can Yeah, subgenre them in different right. categories. Okay? Even the cords and all So they make, the legs and all are so beautifully yeah. intricate So carvings I are think there. it's high time like I was very this time when Modi ji came up with that our toys, Constituency. Okay. the toys. He Yes, introduced yes, our old school toys and all, and they look correct. fantastic. Ram, Sita, and all, very cute, Absolutely. small ones, very beautiful. Yeah, So I think we need to again reignite that and bring it to the people, and every government should understand and realize what treasure they absolutely. have themselves. I'll tell you why. I don't know how many of you guys have gone to China, but when I went to China, I was zapped. I was shocked. Why? Because imagine if there is a shirt, okay? So what China will do, they'll have one village. One village only makes buttons. Only buttons. They are good at it and they are fast at it. They know how good buttons are made. So they only make buttons. Okay, same way I It's think if you like go to North division of India, labor, right? Doing the same thing yeah. again and again. Yeah. So that's why mass production, everything becomes easier. They don't have to leave. Sugar also. If I ask all my people, my carpenters who are in Bombay, especially last year was so bad. For two of them, I had kept them in my workshop, and later on they had to go. But it's very sad. And when I was speaking and talking to them, and they are married. उन लोग का दिल नहीं है इधर आके काम करने का. They want to be with their family. But what to do? Their own state hasn't done anything for them. That's the reason they have to. और इधर के काम करके ये करके कुछ बचा के they have to send it back also home. So please, on a regular basis, if you guys can keep hitting this to the righteous people, uh, uh, that each and every state need to realize what is their own treasure within them. And the second thing is about politician loco university, hospital, or school से कल्टी करो. I think it has to come. You cannot own one or none of your family member. ठीक है? That's I'm right. telling you, in Bombay, half of the beer bars and everything is owned by them Yes. only. I can Even prove it. engineering I can colleges, prove many it. of them. ठीक Yes. है? So it's Bhavna again they also. have completely captured over everything. ठीक है? Right. And that's the reason everything goes so off. Because अगर उन लोग पकड़े भी जाते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता है. वही तो वहाँ का है. बोले ये किसका है? Absolutely. अरे ये तो सांप का ही है. रहने दो, छोड़ दो. इस पे कुछ होएगा ही नहीं, इसलिए रहने दो. So these two stuff I wanted to come and say. Thank you so much. Take care. See you all. Bye. Thank you. Thank you. Bhavna, you also wanted to say something, right? I'll Hello, just pull everyone. myself out of the stream and I'm here. Yeah, including people. Yeah. So, कॉमन मैन जस्ट हेलो. मुझे जस्ट ये कहना है, आपने का जो क्वेश्चंस हैं, मैं एक क्वेश्चन के स्पेशली आपसे आई हूँ बात करने, जिसमें आपने कहा है कि वुमेन्स नाम क्यों नहीं लेती हैं अपने हस्बैंड का. हम लोग इस जनरेशन के हैं, हमें इसका पर्टिकुलर रीजन तो नहीं मालूम है, बट जब भी लाइक 2000 की बात मैं स्टार्ट करती हूँ, 2000 में जब मैं लाइक मैरिज मेरी हुई, सो लाइक आई यूज्ड टू टेक नेम husband ka, because we work together in the same company. So I say ki Anubhav, and he said to me Bhavna, same, we have no issue. Like but जो neighbors थे या जो relations में थे, उन्होंने हमें force किया कि husband का नाम नहीं लेते हैं. मैंने उनसे reason नहीं जाना, because वो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि maybe we are not educated. We are educated, हमें कोई problem नहीं है, मैं नाम लूंगी. और इसमें हम दोनों partners को भी कोई problem नहीं थी. रीजन बीइंग इसका ये पता चला जो आप जानना चाहते हैं, कि उसमें एज हस्बैंड की कम हो जाती है. ठीक है, तो मुझे बहुत ही स्टूपिड एक रीजन लगा. यहाँ मुझे लगा कि कुछ ऐसा रीजन खास नहीं है, बिकॉज एज फैक्टर कहाँ से आया, कुछ उसमें कोई स्टोरी होगी, पहले हमारे कुछ रिलीजन्स में, हिंदू धर्म में कोई स्टोरी होगी.
डेफिनेटली उससे कनेक्टेड होगा ये। बट जो मैं गिरजा मैम से एग्री करती हूँ, क्योंकि गिरजा मैम ने जो बोला कि एज फैक्टर होता था 7 to 10 ईयर्स 15 ईयर्स, क्योंकि पहले जो थे जो जेंट्स होते थे वो थोड़ी बड़ी एज में, गर्ल और जो बॉय में जो चेंज लाइक बीच में जो एक एज का गैप होता था वो मोर देन ज्यादा गैप होता था, इसलिए शायद वो चीज नहीं होती होगी। दूसरा ये कि एज का जो फैक्टर है वो मे बी वो इम्पोर्टेंट है, बट ये जो नाम लेने का, उसमें भी नाम लेने में उन्होंने बोला कि अगर आप ओरिजिनल नेम ना लेकर अगर आप उसका कोई निक नेम लें, जैसे लाइक यू यूज टू टेक हाँ रोहन, राजू, सुनो, इन ऑल, इस टॉपिक पे ये चीजें चलती थी कि ऐसे बोलाओगे तो एज फैक्टर, मतलब आपने रियल नेम भी नहीं लिया अपने हस्बैंड का, और मे बी उससे एक इफेक्ट नहीं पड़ा कि उनकी एज कम हो गई। ये रीजन दो मुझे पता चले, ऑल्दो हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज वो हमें लगा कि वी आर एजुकेटेड पीपल, हमें ऐसा यूज नहीं लगा, बट मेरा यही एक पर्टिकुलर रीजन है जो मुझे लगा उसके पीछे एक रीजन है। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं नहीं नहीं, आप जो कह रही हैं आई अग्री विथ यू, टोटली अग्री विथ यू, और आपने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी है। देखिए जो देखिए होल सेशन ही इस बात है कि जो हमें मिला है विरासत में अच्छी चीज है, लेट्स कैरी ऑन विद इट। जहां पर जो यस, चीज में कोई सेंस नहीं बनता है, या फिर आज के जमाने में बोलते हैं ना इट्स ऑब्सोलीट, आज के जमाने में सूट नहीं होता है, वी हमें उससे आगे बढ़ना है और उससे कुछ अच्छा तरीका सोचना है। ये बेसिक चीज है। और मैं कहना, मेरा हाईलाइट करने का इरादा, मेरा मकसद ये है कि छोटी छोटी चीज पे जिससे बोलते हैं ना कुछ वैल्यू भी नहीं होता है, हम उसे अभी भी होल्ड करके रखें और उसे बहुत बड़ी बात बना रहे हैं। बिल्कुल राइट। एग्जाम्पल दिया करी, सोसाइटी वालों ने आके बोला, अरे मैं मेरे घर के अंदर कुछ भी बोलो, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ को कुछ भी नाम से बताऊं, आपको इससे क्या प्रॉब्लम? इज दैट अ रिक्वायरमेंट टू से इन द सोसाइटी? नहीं। इसी लाइक थिंक अबाउट, मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर कल ना अगर इमरजेंसी हो गई, ठीक है, घर के अंदर ही इमरजेंसी हो गई, और आपको आपके पार्टनर से या फिर आपके अदर हाफ से अगर मदद चाहिए, तो फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल राइट। एक्चुअली, सो इट्स जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल आई थिंक। करिए ऐसे बहुत सारे और भी कई हैं जो कि हमें इनहेरिटेंस से मिल चुके हैं अंग्रेजों के जमाने के पहले या बाद में, आज भी हम कैरी ऑन कर रहे हैं, एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना होगा ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में सोच के। यस, और लव अरेंज में स्पेशली मैंने देखा है कि हम लोग अपने हस्बैंड का नाम लेते हैं बिकॉज वहाँ पे एक कंफर्टेबल लेवल होता है और उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत चीजें मैटर करती हैं, और मुझे लगता है कि सामने वाले पर्सन को भी कोई इश्यू नहीं होता है। और स्पेशली जैसे आपने क्वेश्चन बोला, मैं XYZ बंदे का नाम लेकर क्यों बुलाऊंगी, है ना, सुनो जी, ये दिस एंड दैट टाइप, है ना। सो जो रियल नेम है उसी से बुलाऊंगी, और मुझे उसमें लगता है ज्यादा मुझे उसमें ऑनेस्टी फील होती है, और कुछ चीजों को जो हम सुपरस्टिशियस बन के फॉलो कर रहे हैं उसको हमें हटाना पड़ेगा, जी, बिकॉज वो हमारे बच्चों में आगे जनरेशन में आएगा, है ना, और मे बी उनको वो काफी बैक ले जाएगा। और एक क्वेश्चन मेरा ये था, फ्रीज ने बोला एजुकेशन में स्कूल्स के लिए, स्कूल्स इज अ बिग बिजनेस नाउ। आज के वक्त में अगर किसी को बिजनेस करना है, उन्होंने स्कूल एजुकेशन में पैसा लगाते हैं, टेम्पल्स में पैसा लगाते हैं, हॉस्पिटल्स में पैसा लगाते हैं, बिकॉज इससे बहुत जल्दी मनी जो है वो डबल होती है। यू गॉट माई पॉइंट। और एजुकेशन को आजकल स्कूल ने ऐसा बिजनेस बनाया है कि उनको डजंट मैटर कि स्टडीज बेटर है या नहीं है ना, बस उनको एक फैसिलिटी होटल की तरह, हम लोग एक्चुअली उसके लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी वांट कि हमारे बच्चों को कंफर्टेबल एटमोसफेयर मिले, घर में एसी है तो स्कूल्स में एसी मिले, है ना, ऐसे प्ले ग्राउंड्स हो, ऐसा अंदर का इंटीरियर हो, क्लासेस ऐसे हो, हम लोग कंपेयर करते हैं फॉरेन से, है ना। सो वो लोग हमारी फीलिंग्स को लेकर आ रहे हैं ना, एक्चुअली दे आर प्लेइंग विद आवर फीलिंग्स, दे आर गिविंग अस, हाँ, उस तरह का एटमोसफेयर दे रहे हैं, दे आर चार्जिंग वेरी हाईली, जो हमारे पेरेंट्स 1 ईयर में करते थे। सॉरी, हेलो, कैरी ऑन। हाँ, सो मुझे ये लगा कि दे आर प्लेइंग विद आवर फीलिंग्स एंड दे नो कि आज का जो पर्सन है वो क्या चाहता है अपने एजुकेशन में। एजुकेशन मैटर नहीं कर रही है, स्कूल का इंटीरियर मैटर कर रहा है, किस एटमोसफेयर में बच्चा बढ़ रहा है, मेरा बच्चा कंफर्टेबल फील करे, इस तरह का वे ऑफ स्टडी। और जो लास्ट अगर आप आके घूम फिर के आते हो तो स्टडीज में फिर वो जीरो है, कोई स्टडीज नहीं है। अभी जो मैं स्कूल्स में देख रही हूँ वो बिजनेस बिजनेस डील हो रही है, मतलब उनके देखिए 1 ईयर में आप उनकी ग्रोथ देखिए, उनका ग्राफ देखेंगे अगर आप, एकदम 1 से लेकर एकदम हाइट पे जा रहा है। व्हाई? बिकॉज अभी जो हमारी जो हम लोग हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, है ना, इन मल्टीनेशनल कंपनीज, उसमें हम लोग अर्न कर रहे हैं हाईली, 8 लाख 10 लाख का पैकेज है पर मंथ, उसमें हम लोग पे कर सकते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपटीशन हो गया इसमें एजुकेशन में। ऑल दो मैंने एक और चीज देखी है अभी इंडिया में कि अभी गवर्नमेंट स्कूल ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, है ना। वहां का इंटीरियर भी बहुत अच्छा आ रहा है अगर आप देखें तो। अभी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो दिल्ली स्कूल्स बहुत अच्छे कर रही हैं, ठीक है। उनमें वो लोग बहुत टेक्निक्स में और स्कूल्स के जो लेवल है उनके उसके प्लेटफॉर्म को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है वो आगे जाके बहुत बेनिफिशियल होगा। बट मुझे अभी जो लग रहा है जो अभी बिजनेस से जो अभी कॉमन पर्सन जैसे यू आर अ कॉमन मैन, कॉमन लोग जो सफर कर रहे हैं इस पैंडेमिक में वो ये हो रहा है बिकॉज अर्निंग नहीं है। और अभी क्या है हाईली आपको एजुकेशन में देना है और विदाउट एजुकेशन आप नहीं रह सकते। दूसरा मे बी मैं आपका टॉपिक कहीं और ले जाऊं, मुझे एजुकेशन से ही बोलना है। जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द किड्स बिकॉज 8 o'clock से लेकर टिल 2 o'clock 7 hours या 5 to 7 hours बच्चा कंटिन्यूसली अपनी क्लासेस में रहता है। बीच में 20 गैप से क्या बच्चा रिलीफ फील करता है। पेरेंट्स का प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है। ऑल दो इतना प्रेशर आ रहा है बच्चों पे। उसके बाद आपको पता है मैंने एक सुना है एक डॉक्टर का कि आने वाली जनरेशन अभी तो डॉक्टर्स चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास बच्चों को लेकर जाते थे। इन फ्यूचर आप लोग ईएनटी और बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास लेकर जाएंगे क्योंकि उनको ईयर और माइंड में इश्यू होने लग जाए। मेरे को पता नहीं आप एग्री करेंगे नहीं करेंगे बट मैंने ये सुना है और मुझे डेफिनेटली लगता है कि ऐसा होने वाला। भावना जी, मैं आपको एक बताता हूँ, ये बच्चों की बात नहीं, मैं मेरी खुद की पर्सनल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं घर से काम करता हूँ कोविड की वजह से। और जो हम लोग दिन में काफी लंबी मीटिंग हो जाती है, ऑनलाइन मीटिंग, तो मुझे हेडफोन पहनना पड़ता है। अभी कुछ एक महीने पहले की बात है, मुझे बराबर से सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैंने मेरे डॉक्टर से बात की। उसने मुझे रेकमेंड किया कि आप अपने ईयर टेस्ट कीजिए। और ये क्या हो रहा है, लाइक जैसे कि आप मुझसे बात कर रही हैं, अब कह रही थी ये मेरे आपके जो वर्ड्स हैं मुझे रजिस्टर नहीं हो रहे। तो अगर हेडफोन रहेंगे तो ही मुझे बराबर सुनाई दे रहा था। क्योंकि क्या हो रहा है कि कोविड में ना, ये इतनी हम लोग घर से तो काम कर रहे हैं, विच इज एक्सेलेंट, मजा आता है घर से काम करने के लिए। पर ये जो हम लोग जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं, इसकी वजह से हमारी जो नेचुरल एबिलिटी है वो डिमिनिश होते जा रही है। सो आई टोटली एग्री विद यू, आप जो कह रही हैं, फॉर किड्स इट इज डैमेजिंग मोर एक्चुअली। डेफिनेटली मुझे लगता है कि नेक्स्ट सेशन में भी आपको ये एजुकेशन का मैटर और जो ऑनलाइन क्लासेस है इसके ऊपर बात करनी चाहिए और लोगों की ज्यादा से ज्यादा व्यूज देखने चाहिए कि क्या व्यूज हमें मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच कॉमन, थैंक यू। हाँ जी सर, लो मैंने आपको सर कह दिया। हाँ जी बोलिए, आपका नाम नहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। प्रोफेसर राम आर के। नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिए, आपकी थोड़ी वॉल्यूम जरा ठीक नहीं आ रही है। जी अब थोड़ी अच्छी है। हाँ जी। The education what I would like to tell you is beyond 1834. There used to be 750,000 schools operating in every single village earlier. Lord Macaulay came from the Britain Parliament and he transformed the education system. When the first school started off in, there are not many schools in UK at that point in time. And that value-based education. And education cannot be bought and sold. Madam was telling that, the schools are flourishing and luxurious and stuff like that. But basically, if you want to really focus on education, in the ancient, the Vedas and Upanishads, knowledge or education is not viable or sellable. Water, salt, education, and communication are fundamental rights to for every single living beings. Everybody has the right to education, but that fundamental right is not provided by any governments around the world. You need to pay, and that payment, when you pay the money, your knowledge becomes poison for you. Agree with you. Agree with you. Which is happening now. That Pradyumna guy in Gurgaon was murdered in a bathroom, in a washroom. There's so many incidents are happening that is evident that schools are not doing well. And most of the multinational or high-flying schools have a very code-red applications. If you look at the colonial schools or any ancient highly paid school, they are more like a meeting or dating sites for students in a school or colleges. They're not interested in education. ओके, देखिए
Uh, राम जी, बहुत अच्छा नाम है आपका, राम जी। पहले तो देखिए, आप जो कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि जो जो भी आपने कहा, पहली बात तो वो सही है, मैं आपसे अग्री करता हूँ कि एवरीवन हैज द राइट फॉर एजुकेशन। जैसे आपने पैसा दे दिया, बात खत्म, आंकवा नॉट फ्री। नहीं, पैसा देने से नहीं है, पैसा दे करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हाँ जी, पॉइजन हो जाता है. There is a shloka in the Sutta which says Dharam Agnim, Dharam Vayu, Dharam Suryo, Dharam Vasu. Dharam Indra, Brahaspatira, Varun Dharmastana. Means Varun. You are the Varun, right? Varun Kapur. ओके। Are you the Varun? नो, आई एम नॉट वरुण। Okay. My alias is common I man. thought I've seen Varun, but I thought that you have a lookalike similar I'm his face. twin, actually. I'm Varun Kapur's twin. You can say that. All right, this is Varun stream, so I come and I give my thoughts in a. So in the ancient time, if you are selling the education, it becomes poison. It's called Alakshmi Okay. in the ancient sciences. The Sanskrit is the mother of all languages. So I'm a Sanskrit scholar. I know about 9 languages, and fortunately, my parents and my grandparents and people who were there with me has taught me a very. Before I went to school, I was taught I think 1400 slokas before I joined the lower KG. And then I went to the school, I was so fast in learning. So the teacher said that this boy is smarter. Sending those 6 months I spent in lower KG. 6 months I was promoted to upper KG. 6 months I was promoted to first. So by the time I reached the third and fourth standard, everybody was 1.5, 2 years elder than me. Then I said I should not act too much of smart, otherwise I'll get partial with the older students. So I stayed in that school. But over a period of time, what I realized is school education is deteriorated day by day. In fact, if you want to know more about India and Indian culture, I also went to London to finish my PhD. And Okay. when I stayed there, I could realize that what could normally could be spent in or taught in Indian schools have actually been deleted from the textbooks. And Sorry, can you repeat that? What was deleted from the textbook? there are a lot of primary school books which we used to have lessons in the Hindi, English, Sanskrit, and all the other languages is all being transformed. Every year, CBSE and the central board keeps changing the syllabus. Okay. According to the government change, the syllabus change. So Okay. Now I got it. Sorry, just a little bit of housekeeping. Sorry, Ramji, I think your voice is a little distorted. We can't hear properly, even though we are able to understand. Yeah, so can you remove your headphones or something and then continue speaking? Because your earphones is giving some static. We are not able to hear you clearly. Thank you. Because my microphone has a issue, so I can only send my voice through the headphones. Okay. So it's a little distorted, unfortunately. So, Common Man, if you can repeat what he's saying before you answer, that will be awesome. All right, I'll speak slowly. Okay. So what has happened? 1834, the Lord Macaulay, which education they were also gifted. Whatever they were teaching in London or UK, that was also part of the Indian education earlier. So there are three kinds of education is there. There are three kinds of. Before 2,652 years ago, the Siddhartha Gautam Buddha had mentioned three kinds of way to learn knowledge. He said Pariyati, Pratipatti, and Prativedan. Means that the person who has by hearted all four Vedas and Upanishads is a base scholar. So there is no written script. In the ancient time, before Buddha, there was no written thing. Your knowledge is tested through the communication, the way we are talking to each other. Shastrat, they call it Shastrat. So you have to debate, and in a debate, there is a whole population. One is backing up the one speaker, another is backing up the other speaker, and they both have the time to talk on a particular subject, which is accepted by the larger population. And the supposedly 10 villages are talking for one speaker, and 20 villages are talking for another speaker. At the end of the discussion, all 30 villages goes to one side, and they said that we approve his speech and his knowledge.
So the knowledge is uh, transformed to the larger population through this medium, and it was done free and fair. There is no commercial transaction. There are no banking involvements. In my purview, if you look at the things, all the banks, all the money, and all the IMF, World Bank, and Swiss Bank, dollars, euros, and pounds. If you look at the historical background of the Reserve Bank of India, 1 rupee was equivalent to 1 pound, and one rupee used to get $2. 50 paisa was $1 in 1947. Check the Reserve Bank of India's rates. राम जी, अब आपने जो अभी कहा कि हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम था, द सेम वे जैसे कि आज के तारीख में पेपर्स लिखे जाते हैं, थीसिस लिखे जाते हैं और वाइड ऑडियंस उसे पढ़ के उसे अप्रूवमेंट या पब्लिसाइज करते हैं फर्दर, ठीक है? सो वी ऑलरेडी हैड एन एडवांस सिस्टम. दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. एम आई राइट और रॉन्ग? This is what I Right want. now, I was explaining you. I said 3 kinds of education. So by hearting is one way of education. Yes. Second way, and you are knowledgeable, and I catch hold of you. And whenever I need knowledge, I come to you for advice or guidance. So that's the Okay. second-hand education. The Okay. third-hand education, or third-class education, is written and reading from books. Because the person who wrote the book cannot put his ideas 100% onto the book. That book is probably able to maximum express 6 to 12% of his ideas into book. When you read the book, what is your perspective towards reading the book, and how you understand the deeper meanings of the word which is written by the author is never given to you. Okay. So there is a perspective. There is a perspective which you have. So right now, Lord McLeod, what he did, he has installed third-class education in India. And he wanted, because he wrote, he submitted a report in the Parliament House in London that I have not seen one person who's a beggar, who's a thief in this country. People in India are much more educated and learned than anybody else, and there are almost the literacy rates were 16% in those time and period. India was highly educated. Every single villager or every single nook and corner person was highly learned because there was a proper system which was free and fair education to right to everyone. If you look at the Chanakya's time or Chandragupta Maurya's time, he was a person, a child on a street, and Chandragupta adopted him, the Chanakya, and he made him the emperor of the country. If you look at that, the Bharat, there was a Bharat, and the king named Bharat, and Bharat had 3 wives and 9 children. None of them was competent to become an emperor of the country. And he said, I will go and find out. And he was walking and taking his the Ratha, the horse cart, onto the jungle, and he found one man who was able to take care of it. So common man, he said that any common man who has a competence to become a king, he is entitled to become a king. That is how this country is known today as Bharat. The Bharat was also ancestor to Lord Rama earlier time. So there is a larger in which education is related. You won't get any of these stories in your textbooks or your schools or your colleges, and you will be reading about Mughals and people who barbarically. I'm so sorry. I'm so sorry to cut you again. I'm so sorry to cut you again. It's actually absolutely breaking, Rama. I'm so sorry to say this again, but a lot of people are having trouble with the audio. Try once, please. Remove that and try once. Or just join back. Or join back. Common man, you can just. Can you hear me? Remove your. Yes, now it is better. Okay. Yeah, it's like Yes. Okay. Yes. it's much Because better. I put my microphone little closer to my mouth. You can see on the video. So probably that's the change I've done. Now it is clear. Yes. Common man, you can time bound and you can continue do a round robin and come back to other people. I was Okay. unhappy. So other people also get a chance to talk. Yeah. I was unhappy in my own schooling days. I have learned in a government school. I was, my dad was a government officer. So I was constantly, asking myself a question. Why do I have to study all these subjects, which is nothing to do with my interests or my like or dislike?
some subjects which I used to like and want to penetrate on. And there are some subjects which was like in forced education onto me. And I have to score a mark at the end of the day and then, pass the examination and go. I've done that, did that, but my quest for the knowledge always remained. And then I studied on my own. It took 12 years for me to study various, books which is not available in your text. And then I had to travel down. I went to the people who were having a knowledge. I traveled across the length and breadth of India, abroad. And then now I understand what happened, why, and who did what in that period of time. Maybe if you have a next time, probably I can share. I did my, historical background onto the Indian continent and how, when, and who did what. So those things I could able to do. And then, yes, now I understand that why it is happening where. Because if you just look at the initial peripheries of the whole thing, because the human resources development, which is the HRD Ministry of the Government of India, which, dictates terms to transfer the textbooks and the content of the syllabus has to be having a larger perspective towards life. But these textbooks and is mostly done for the financial gains because schools and colleges. I remember in the government school where I was admitted, my per annum fees was 10 rupees. And in 10 rupees, whatever education I got, the today's school, after charging 10 lakh rupees also, they're not able to give 10% of the education. So it is very evident that the financial amount which you put in and the amount of education you learn has nothing to do with finances. So, now, Ramji, sorry, I'm gonna, I'll be interrupting you. मुझे आपसे ये जानना है कि क्या आज की तारीख में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि इम्प्रूवमेंट, आप कह रहे हैं कि आपके समय पे एजुकेशन क्वालिटी अच्छी थी और आज पैसा देकर, ज्यादा पैसा देकर भी एजुकेशन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आपकी ओपिनियन के हिसाब से ऐसा क्या चेंज आना चाहिए जो कि वो जो क्वालिटी आज की तारीख में भी वही क्वालिटी या उससे बेहतरीन क्वालिटी। बहुत सिंपल आंसर है। People across India should put their foot down and decide that I want education for myself, my family, राम जी, my children. वॉइस आपकी फिर से डिस्टॉर्ट हो रही है, फिर से डिस्टॉर्ट होना चालू हो गई। So let's do this, Ramji. You can join back here while we'll just take Hema ji, and then why don't you join the stream back and you can keep your video off so that maybe it will help your bandwidth. Possible. Okay. Can you hear me? It's still a little distorted. I'm going to remove you from the stream and you can join back in using the StreamYard link. I'll post it. Okay, so let's, continue, Hello, please comment. Yeah, thank you. Hello, Hema. How are you? You're on mute, Hema. Yeah, hi, Common Man. Do I call you just Common Man? I don't know the name yet. Well, my real name is, my real world name is Sanjay, actually. Sanjay. Okay, hi, Sanjay. I was actually planning my own live right now and I was getting ready, but I saw this and I thought I'll add few points that I'm thinking in my mind. I want to go back to what you were addressing on the sir, like people calling sir, madam, because this was something I brought up yesterday in my channel. Because people, sometimes they comment, they call me ma'am or Hemaji and all. So I was always telling them, like, you don't need to call me ma'am, just call me Hema. Because yahan pe, we always call name, right? We never like say we don't add something. Like, of course, like when I see somebody older than me, I do add a G and I call them. But if I feel like they're very younger to me, I usually just call them by name, because मुझे लगता है जैसे नाम बुलाने से there is a lot of respect and name, like the love in that, rather than like adding something to it. Because I had a person in my channel, he's just 15 years old. I had no idea by looking at the name. So I'm always saying like, okay, that name with a G. So when I asked him, he was like, I was 15. So then I was like, okay, then I can just call you by name, because that is, it's more, I feel like there's more love when you call by name. So I remember
while growing up also, I remember my dad, like, middle class family. My dad is very humble. So he always would, everybody would call sir, right? India mein abhi bhi karte hain, like my dad still does that. So, but you were right. As soon as you call that sir, there are people who take it in a right way, but there are also people who take advantage of it. So most of the time I have seen Yeah. that myself, and I was very small, but I still didn't like it, that, I felt like people are like kind of taking advantage of it. Some officers and all, when we used to call like sir or something, like I would not see them reciprocate in that same way, giving that respect. Because sometimes when you call sir, madam, even if the other person reciprocates in the same way, then it kind of, it makes it okay. But then you don't know how. So that's why I have not really liked that. And I know why other people here, like jab hum channel pe baithte hain and all, people come and they call ma'am or something, just because out of respect, because they don't want to offend you. The same thing for me too. Every time I go on somewhere, I'm like adding G to everything, just because I don't know what the other person is thinking. So I'm like, Mhm. just adding that so that I don't offend them. But I think it's like, it is that cultural thing that we just, we are like, we should not do that, because you are equal parts. Like when I talk to my manager here, I just call her by name. I just say Monica, right? So then I have that kind of relation with her, that I can actually talk about anything, rather than having that level up. Even if it's a VP here, we just say the name and talk that. So that is just something I wanted to add on that. And another thing I wanted to add on is like the um, about the education, right? Like we remember um, growing up, every time, like my mom used to say, like, I want to make one kid engineer, one kid lawyer, and one kid a doctor, just because she saw some thing on the magazine where there were 4 kids and each had one profession. And I still remember that so well, because she looked at that magazine cover and she was like, I want one, one of my kid to be this. So in the end, I mean, she got 2 engineers and a doctor, but she didn't get a lawyer. So even now she tells me, because of the way I talk, she tells that you should have become a lawyer. So so that happens there. But now in this world, like here, I cannot tell my kids that. I cannot tell that, I want you to be a doctor or a engineer or anything, because they have so many options right now. At least here, like I live in the US. I don't know where you are, like in India or here, but here they have so many options. At least not in India. Like in India, I remember also thinking that I have to only do this. Like I have to only go into the engineering, or I have to, and we never even thought of, like, if somebody went, they didn't go to engineering and they went to like do BSc. So that was considered very, like, oh, they're not like capable of doing this kind of thing, which is very wrong, because you may have different vision or different interests and you want to do something else, right? So you may go in this other line. But I think even today, I don't know, but I think even today it is like that in India, that where if you're trying to do something else, going into like psychology or something like that, right, they are not considered as well as like somebody doing going into medical field, which to me, like, still today it feels strange, because unless those doors and all open up, I don't know, maybe it's all linked to what kind of jobs they get, and because every time we hear our parents say that you're not going to get a good job if you do this, right? If you do fashion designing, you're not going to get a good job. So that's why everybody are like trying to become like an IT engineer, or trying to become a doctor, so I don't know how. I mean, it's just easy to tell for me, but I don't know how, like, that whole education system has to change in such certain way, that every profession is given that value, and every profession has like some kind of job in the future for them. Because I think that's the problem, because everybody, even if they have interest, like growing up, I also had interest to do fashion designing and all, but I never went into it, just because there's no, like, everybody, like, they say like there's no money in it, or what are you going to do doing it? So I think, I don't know how to change that mindset. Like, what do you think, like, what should be done in order to have like jobs in all kind of these kind of sectors, small sectors like that? See the jobs, नौकरी, आज की तारीख में प्रोफेशंस बहुत बदल गए.
बहुत सारे नवे नवे प्रोफेशंस भी आए हैं। और अभी भी क्या हो रहा है कि अभी भी जो माइंडसेट है, जो हमारा आज का टॉपिक है, माइंडसेट और बिहेवियर है, बेसिकली बिहेवियर एज एन पेरेंट्स, पेरेंट्स के थ्रू आता है। माइंड यू, पेरेंट्स गलत नहीं है, वो अपने बच्चे का भलाई चाहता है, ठीक है, कि ये तो बच्चा ऐसे, क्या पता, हमें इसे फोर्स करते हैं या वो हमें इसे इनकरेज करते हैं ताकि जाके डॉक्टर इंजीनियर लॉयर बन जाए, ठीक है, बिकॉज अपने बच्चे का सही चाहते हैं। पर आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है और करियर है विच अ पर्सन कैन मेक इट बिग। आज की तारीख में डेडिकेटेड यूट्यूबर्स हैं जो कि अलग अलग क्या बोलते हैं सब्जेक्ट पे सिर्फ डेडिकेटेड चैनल बनाते हैं, चला रहे हैं, एंड दे आर क्वाइट सक्सेसफुल इन इट, दे आर मेकिंग अ लिविंग फॉर इट, ओके। फिर मैं जो गिनेस गिनेस रिकॉर्ड था उसके बीच में एक बंदे से बात कर रहा था, एंड आई जस्ट जंप्ड इन कन्वर्सेशन। ई स्पोर्ट, ये ई स्पोर्ट एक ऐसा अनदर एरिया है जो कि इंडिया इज टोटली, it's like a it's an undominated market India, and I'm calling it market, मैं सिर्फ इंडिया को मार्केट कहना क्योंकि हेड काउंट बहुत ज्यादा है। What was that you named? Esports, Esports. Okay. yeah, like gaming and everything, Gaming you and know, all. Right. Right. competitions and everything, etc. You see a lot of things. फिर दूसरी है कि देखिए देखिए काफी लोग इंडिविजुअल ओपिनियंस मैं कहता हूँ, और आज की तारीख में फाइनेंशियल सिस्टम्स वगैरह में भी काफी कुछ नवा बदल चुके हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह। नाउ क्रिप्टो करेंसी मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक फॉर्मेट बन चुका है, एक अपना ही एक प्लेटफॉर्म है, मगर बहुत से अलग अलग वॉट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, ये क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं। यू सी, सो हाउ इट इज गोइंग हैंड टू हैंड। सो दुनिया बदल चुकी है। जस्ट बिकॉज किसी ने एक यूज किया है क्रिप्टो करेंसी को गलत तरीके से, doesn't mean cryptocurrency is bad. There is a lot of opportunity है, there are a lot of job opportunities है क्रिप्टो करेंसी के लिए। जैसे कि हम लोग, जैसे कि आईटी की स्किल्स होती है, आज की तारीख में हम लोग जब भी आईटी स्किल्स बात करते हैं, या तो बोलते हैं इंजीनियर रहेगा, हैकर रहेगा, या वेबसाइट बनाएगा, ठीक है, पर इट्स Right. मोर देन दैट, मोर देन दैट। और क्रिप्टो करेंसी ने और उसको बड़ा कर दिया है, ठीक है। दुनिया दुनिया दिन ब दिन बहुत जल्दी इवॉल्व होते जा रही है, और हम जो लोग हैं ना, हम लोग को हम लोग क्या करें, हम लोग हमारे को वहां का वहां ही रोक के रखें, और कोई, हम लोग खुद ही हम लोग को रोक के रखें। नो वन इज स्टॉपिंग अस। और जो हमको इन्फॉर्मेशन जो फीड की जा रही है ना, हमको डरा डरा के इन्फॉर्मेशन फीड की जा रही है। माना एक ने किसी ने गलती की थी, बट डजंट मीन दैट स्टफ, व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी, व्हाट इज बिल्ड इज रॉन्ग, इज दैट पर्सन हु डिड इज रॉन्ग, you see। So jobs काफी हैं, बहुत से अलग अलग जॉब्स। nowadays I'll tell you, I can't remember the country का नाम नहीं याद है, मैं स्कीइंग के लिए गया था। अब इस बंदे की एग्जांपल देता हूँ, और दिस इज समथिंग वेरी वेरी, मुझे तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, और काश मैं भी ऐसा कुछ कर सकूं। तो मैं स्कीइंग के लिए गया था, और स्कीइंग में जो हमारा स्कीइंग इंस्ट्रक्टर था, मैं उसको पूछा था करके, यार या तो ऑस्ट्रिया में गया था, म्यूनिक, बाय म्यूनिक, ऑस्ट्रिया में गया था। तो मैंने उसको पूछा कि भाई ये तो सिर्फ मौसम है कि ये सीजन है स्कीइंग का, फिर बाकी साल में आप लोग क्या करते हो? अब तो आपको बहुत अच्छे दाम मिल जाते हैं, फिर ये सीजन है इसका। बहुत सारे लोग बोलते करे हॉलीडेज के लिए, स्कीइंग हॉलीडेज के लिए आते नहीं, बोलते करे हम लोग ये सीजन में हम लोग स्कीइंग इंस्ट्रक्टर का काम करते हैं, और बाकी के सीजन में ये जो बंदा है ये कारपेंटरी करता है, मेरी रेस्टोरेंट है, मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, ये दूसरा बंदा है, इसकी गराज है, इसकी वापस से गराज में चले जाता है, इसके डैड की गराज में। सो सी व्हाट दे डू, दे लव, दे हैव अ पैशन कि हमें स्कीइंग करना है और एंजॉय इट एट द सेम टाइम। तो साल में उनके मल्टीपल स्किल्स है, उसके हिसाब से वो लोग रोल अलग अलग करते हैं। और मैंने उसको पूछा तो आप लोग कर लेते हैं? तो they कह रहे नहीं, इट्स नॉट अबाउट मनी, यहाँ पर पैसे की बात नहीं है, वी एंजॉय दिस, हमें मजा आता है कि हम हमारी जो स्किल है, जो हम लोग बचपन से जो हमें मिल रही है स्कीइंग, बिकॉज these guys what they do is they get prepare themselves for the competition actually। Right. But तो these साथ things, में ये these kind of earning भी things, करते that's what I'm saying, that it happens outside India, right? But हैं। you're talking about like outside India, right? So what I'm I'm just trying giving to say, an example. right. I'm trying, why, that's what I'm trying to say, that but in India still the mindset needs to change a little bit in terms of Yes, what they want yes, to do and have passion for it and actually pursue it, instead of just yes. thinking that, oh, okay, no, I only have this option, so I'm just going to become an engineer. So they need to kind of think in different different ways. हेमा, इट्स नॉट ओनली द थिंकिंग ऑफ द वे। एक और मैंने इंडिया में देखी है ये बात कि क्या हो रहा है कि
ये जो आदत पड़ चुकी है, ठीक है, और मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, इससे मेरा ओपिनियन है, बुरा बुरा लगे तो आई एम सॉरी अबाउट इट, मगर ये फैक्ट है, लोगों की ये माइंडसेट और ये आदत पड़ चुकी है कि कोई हमें आके हमारे लिए नौकरी बनाएगा, ये डिपेंडेंसी हो रही है, क्योंकि बोलते हैं करके मैं रोज सुबह जाके मंदिर में एक घंटी बजाऊंगा या घंटी बजाऊंगी, फूल माला डालूंगी, प्रसाद दूंगी, और मैजिकली एकदम जादू के साथ एक नौकरी धमक करके सामने गिरेगी, कोई तो कोई हमें नौकरी देगा। Right. तो That जो point I बोलते agree. हैं That point I agree. Yeah, because Yes. we need more like more entrepreneurs who are like, you know, trying to build upon some certain ideas and certain things, and then, you know, a team can be built, and then you can like go on with your passion, whatever you want to do. That's, I mean, I guess that's how companies are built, right? So they need to have that passion for it. I do see they have a lot of passion nowadays for vlogging, YouTube. I see that just because वो इतना बड़ा बन रहा है अभी YouTube का. But these other things also related to like education or something, like exactly like how SSR was doing. Like he had so many ideas in his basket of doing, like this one, I want to do that. That is not there in current youth that much, but that needs to kind of develop, I feel, even more, like, you know, having passion for like something. And another thing I want to add is like maybe last point, then you can take somebody else also. Just that when we are talking about like why they call name, right? Like they don't call name or something, like why the wives don't call the name or something. For me, I had like a love come arranged marriage. So for me, it was, you know, I knew the person from college, so I would always call name. But it is out of respect. Like Girijaji was like exactly saying, right? I think it's more like the way it has come from long back, right? There was a lot of age gap probably before, and that's why that, you know, it started with that giving that respect. But even now, even though you're same age, it's just continued. If it's an arranged marriage or something, you're still trying to give that respect, so, you know, not to offend that other person, I think. And another thing I've seen is this I don't understand. This is just my personal view. Like if I am talking to someone, I usually just say their name. I don't try to add, like, you know, all my friends' husbands, I just call them by name. I don't add any bhaiya to it or something. But I've seen mostly in our culture, because I think because the girls want to stay safe, they try to add that bhaiya to everybody, which to me, like, you know, I feel like because they just, you know, whatever name is there, they'll just like freeze. I just say freeze. Like I don't try to add this thing, just because I am secure in myself. I feel very secure in myself. So I'm not trying to add anything extra, because I have one brother and that's enough for me. So I don't want like, you know, hundreds of brothers. So that is something also is very cultural for us, that we have, you know, that we want to be safe and we try to add something. So I think we have to let that go a little bit and try to address people with what they are, rather than just adding like a relationship to it or something like that, because I feel that muddies it more when you do that. And it's a fake relationship, to be honest with you. Right. It's a fake relationship. देखिए ये मैं बोलता ना कि बहुत सारे, ये भी एक बहुत अच्छी पॉइंट आपने पिकअप की और हाईलाइट की, कि मैं बोलता ना कि यार तू तो मेरा भाई है, थोड़ी देर बाद अगर उसने कुछ जो कह दिया और वो अग्रीमेंट नहीं है, वो भाई गया सब पानी में, यू नो, लाइक यार मैं तो उसको भाई समझता था, यू हर्ट, यू नो, मुझे बुरा लग गया। पहली बात आप सोचते ही फ्रेंड की जैसा रहने दो ना, उसको भाई बहन क्यों बना रहे हो? Right. I mean, I agree. There are relationships like that where you do feel that brotherly feeling, and you might say bhaiya. That's a different thing. Like if I'm having somebody much older than me, I might add something like that. But what I'm trying to say is, like, I've seen people who add every time. They'll just add that just to keep themselves safe. So I think they need to be secure enough. That's what I'm trying to say. That all the girls or even the guys, they need to be secure enough to, you know, to not do that, and try to, you know, just call by name. You know, there's nothing wrong in that. And I don't know if I am like that, because I grew up with a lot of, like, I had many cousin brothers and sisters, and, you know, I grew up like that. So maybe that is why I am like that. Like, I don't see the difference when I talk to a guy or a girl. It's about the topic I'm talking, but I don't see the difference that, oh, I'm talking to a guy, so I'm going to talk this way, or I'm going talking to a girl, so I'm talking this way. So what difference मैं नहीं देखती हूँ, just because I've probably grown up like that I don't see that. I just focus on the topic that I'm talking to. I won't
like I don't care like who I'm talking to, like which gender I'm talking to. That's what I mean. So that is also, that's what I was saying, because we have lot of things that are rich in our culture. Like, being here in this Yeah. country also, I've been here for a long time. Till today, I have not picked up the accent here. And I ask my son all the time, like, why is it that I've been here for like over 20 years, but why is it that I'm not picked up the accent here? But this is like the explanation that my son gave me. He said, because you have learned English so well in India, you don't want to compromise. So here, and that is because he's telling, because he knows my personality. Like, I don't compromise for anything. Like, if I don't, like, I see a lot of people here, like Indians also, who when they are like in the office and all, they try to be like, they want to gel with this other person, so they try to be cool and try to adopt their culture. Yeah. Which I feel is so you should not, like, it's not so not done, just because then you're losing your originality. So because this is something I always say my kids, like, doesn't matter what, you might be a citizen here, but even today on the paper, when I have to sign who we are, we still have to check the race as Asian. We don't check it, I don't check it as American for my kids. I Okay. still have to write it as Asian, right? So your originality is still attached to you. So don't become that way, that कि एक दिन ऐसा आएगा फिर then लो जो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, But that is exactly what will happen if you lose your like originality. Because I've seen lot of Indians, like I see do that, and I feel like if you respect yourself, then others will respect you. जैसे मैं अगर ऑफिस जाती हूँ, तो I have all kind of friends, right? Whether it's black, white, gay friends, I have everything, and they all respect me just because I have strong values. Because if I'm like, okay, Thursday I'm not going to eat meat, or Monday I'm not going to eat meat, so us particular day they are not taking offense to it, right? If they're ordering food, they'll be like, okay, we already know that Hema is not going to eat this particular day. So they are actually respecting my culture and what I believe in. So I feel like when you don't respect yourself and you try to just gel with them and do whatever they want, then they don't respect you as much. जबकि लोग सोचते हैं कि शायद वो मुझे रेस्पेक्ट करेंगे बिकॉज मैं उनकी तरह बन रहा हूँ, बट वो ऐसा नहीं होता है. इन एक्चुअलिटी, actually they'll respect you only because they know that this girl is strong, she knows what she is. That is when they will respect you, like as a Indian. So that's what I just wanted to put across, that don't ever lose where you come from and your originality, because that is what you are. You cannot be anything else other than that. So the accent thing, I was talking that I think I got derailed, but that's what my son was saying, that because you learned so well, so that's why when you come here, like, you're not like picking it up, and you're not, and it kind of made sense in the sense that I had a cousin who did not know English very well. When she came here, and she actually started talking English here, and it was easy for her to pick up the accent. So then she kind of, very fast she picked up that accent. And like our kids have that accent because they're born and brought up here. Yeah, so they have that accent. So, but for me, it was like, I feel like people, no offense to people who get the accent. Maybe there are people who, just adopt it just because they're talking to each other like for a long time and they adopt it. But there are also people who kind of, I feel like, have learned the accent so that they, they kind of get that accent. So it's really not their originality, but they're actually, kind of learned it, and trying to like talk like the people here, in that way. So that's just another point I just wanted to put across. I think I'm done. मेरा live मैं करने वाली थी, but late हो रहा है मेरे लिए. Thank you very much. Yeah. एक मिनट राम जी, हेमा जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट आपने रेस किए हैं और बहुत अच्छी बातें हाईलाइट की है. एंड ये जो ऐसे टाइप के जो नॉलेज है, ओपनली कहना, इट्स नॉट वेरी इजी एंड टू एक्सेप्ट इट ऑल्सो. क्या होता है कि आप जो कह रही हैं, एक्सेंट की बात कर रही हैं, पहली बात तो मैं जो एरिया में ग्रू हूँ, मुझे वहां से ऑलरेडी गिफ्ट मिल रही है. बचपन से मैं बात सुनते आ रहा हूँ, लोग मेरी एक्सेंट पे कमेंट मारते हैं कि तू बाहर का है, यहाँ का नहीं. फिर मैं जहाँ पर ग्रो अप हुआ, मेरे साथ में मेरे दोस्त पोर्चुगीज थे. वो जो अंग्रेज की औलाद जो पीछे रह गई ना, वो गोरे, वो एक्चुअली वो लोग ही थे. सी, सो मैं उस इसमें तो मुझे सदा ही मिलता था एक्चुअली, आई नेवर माइंडेड इट. और दूसरी बात है कि एक्सेंट ऑलरेडी मैंने देखी है, फेक एक्सेंट. जैसे ही बंदा, व्हाटएवर द पर्सन इज,
वो एयरपोर्ट पहुंच गया एंड दैट्स इट, उसकी एक्सेंट गई। वो तो फिर वो इंडियन एक्सेंट तो है ही नहीं वो एक्चुअली, लाइक और क्या हो जाता है भैया, एयरपोर्ट पे आप अभी बाहर भी नहीं गए हो इंडिया के, अभी भी इंडिया में हो और ऑलरेडी आपकी एक्सेंट चेंज हो, ये मुझे समझ में नहीं आया। और हिलेरियस बात क्या है कि व्हेन दे लैंड ओवर देयर wherever they are going out of India, and it's all like बोलते हैं कि बुरा उनका सपना यहाँ वहाँ हो जाता है, and when they come back और फिर बाद में ना इधर का ना उधर का। I totally agree with you on this। अब मेरे साथ ही होता था कि मेरी जो एक्स वाइफ है वो गोरी अंग्रेज है एक्चुअली, मेरी एक्स वाइफ। और जब हम लोग 10-12 के साल के साथ जब कितने भी साल थे whatever, वो सदा मैं जब उससे बात करता था मुझको एक बात में जानबूझ के मेरे को बोलते अब आया ना तेरे में इंडियन बार, आई लाइक दैट। बोलते यार मैं टोटली हुई वहां का, पैदा ही 24 घंटा 24/7 वैसे के वैसे रहता, अब कहाँ से आया? बोलता नहीं 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 कि तू यहाँ की इवॉल्व करते जा रहा है। मतलब मुझे पता भी नहीं मैं इवॉल्व कर रहा हूँ, बट थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक कि मैं अभी भी मेरी ओरिजिनलिटी है मेरे में खा टोटली एग्री विद यू ऑन दैट। ये हो जाता है एक्चुअली, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हाईलाइटेड एंड शेयर्ड विद अस। Yeah, and no offense to the people who get it naturally also. Maybe there might be some people who kind of adopt it just because they're talking for long. But I don't know. Today, even after 20 years, I still have my South Indian accent, whether I talk English, whether I talk Hindi. And yeah, even though I talk regularly with my kids in English, right? And they have accent, they have the American accent, but I don't know. I don't know if it is just me or, if it is, that's how strong-headed people are. I don't know. But yeah. गिरिजा जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? It's not about being strong-headed. It is just, we are used to talking in a particular way, and we don't feel necessarily that we have to change our accent. Right. Otherwise, we would work on it. If we have learned so many other things, this is not going to be difficult for you. But you don't feel that is going to hamper your progress or communication. So why should you do that? That is one. Because I see a lot of people who have come here and they take English classes in order to get the accent, so that they can talk in that accent. Exactly. Right? So but if my communication is good enough, I've never found the need to do that. Exactly. Yes. So, another thing that you were talking about, the concept of calling bhaiya. I also don't call anybody bhaiya, okay, even though I live in Mumbai. But there are a lot of women who do it, okay. So I had a discussion with a group then, because I'm a coach, right? So I had a discussion with a few people, and they said that it helps because it makes the people around with whom you're talking and the other people around realize or feel that you are not close with them. Otherwise, just because you're sitting next to each other and having food or coffee also, often people form their own conclusions. That is what I was telling Girijaji, because that is the mind. The social mindset is like that. So they want to protect themselves. So they say, like people who are working in, say, BPOs and all those, they have to work with men all the time. Right. And it becomes necessary. You can't just sit in your cabin all the time. You'll be working, you'll be having coffee, canteen, everything. And then there are people who will talk, who are working in the same environment about you like that. So that is why they do it, even though they are also city bred. They won't like it. So sometimes, because the society demands it, you have got to do it, because finally you need a job. You are working hard for it, and you don't want these things to pull you down. Right. You don't want that is where and then say no, I don't want you to go to work. This is escalated really with a girl like this. And that is why I'm bringing that point up, because it's not just the girl. I'm telling that if they call somebody by name, then that other person, like the guy, is taking advantage of it. That's what I'm trying to say. As soon as they call name, they feel like, oh, we have the liberty to close, to get close, which is very wrong. So that is what needs to change, from both sides. It's not. That's why I was saying that when the girls are saying explicitly, right. So when the girl is saying bhaiya, she's only saying just so that she makes that situation comfortable, and keeps herself safe, that okay, I am not going to be close to you, I'm far from it. That's what I meant, when they're saying it, they just want to be safe. That's why they say that. They really don't think that they are their brother, but they want to keep them at an arm's length and make sure that they don't think anything else, or others around also do not think anything else. That's why I said that every time they say that, they only say that to be safe. To be safe, but that mindset needs to change from both the sides. Just because I'm calling you name, you can't take the liberty that you can just talk to me like that. So that needs to change, and which, like I said, I don't know how it will change, because
that is how it is in India, One of that if you my call name. yes, one person told me that she was just sharing with the boss called her the moment she reached home. Okay, so she said, I went by train and it was very hot. So I told him that he said, I called you twice and you didn't pick up the phone. So she said, I was in the bath, sir, so I did not pick up the phone. Afterwards, when I saw it was very late at night and I didn't think it is appropriate. If it was urgent, you could have messaged me or mailed me. I would have looked at it. So then the boss started talking to her very differently from that day. So she said, what gave you that idea that you can talk to me like this? When she asked him, then how come you shared with me that you were taking bath? Right. Can you imagine? Right. So that is a kind of voyeurism dream world that people get into. So she Yeah. said, I'm literally dying for space in my house. I come by train and I'm literally, so in the compartment, in the train compartment, I'm like in a steam bath. I've had a steam bath. I come home and before I enter the kitchen, I want to just hurriedly take a bath. I come home, then I finish my food and I serve my children. By the time I go to bed, 10:30, I'm just looking at the phone and I saw his 2 missed calls. And next day, I just told him, sir, I'm very sorry, I was in the bath. That's it. And from the next day, his behavior started changing. The kind of stories that women tell you, I'm Yeah. telling you. So they have to do everything possible to make men realize, don't get into any kind of dreams. If I Yeah. have anything, I will let you know. Right. I'm very So yeah, sorry. I totally understand that. So that's why I was saying I don't know what's the solution for it. Like, I don't know, the HR has to become, I guess, more More stricter vigilant. and yeah, Yes, more like, yeah. absolutely. Yeah, thank you. I just wanted to raise this point. Is Yes. my voice more clear, audible Well, now? Yes, yes, it is indeed, Rambhai. Hemaji, thank you. Yeah. Thank you so much. For your view. And you made some fantastic point, and I'll be carrying on again. I'll be making another session on education, more of these behaviors, and would love to have you actually again. Yeah, Next, sure. and I'll make an announcement while you're over here. Next Sunday, मैं कुछ एक well, LGBTQ है, gender पे ही session करूंगा actually. So I would like more and more people from different places, like you're from America, whatever the viewpoints you have, etc. Will be Right. a good add out to help people's mindset and learn from it. Will be very valuable. Yeah, sure. I will. Excellent. Yeah. Thank you so much. I think I'll drop off now. Thank you. Thank you so much. I'll see you again. Ramji. Yeah, I don't know how many people are remaining here on the stream now. But yes, your question to answer is, what is the solution to the whole problem in India? I'm not, you want me to switch on the camera or it's okay? It's okay. I've seen you before, so that's totally fine. मैं आपसे सिर्फ एक But I think there's a Krishna and the cow is there, which is the most knowledgeable people of India. So I think I'll keep them as because whatever I've learned is I've learned through the ancient, old. I'm a boy of an old school, even today. And I believe the old school used to have a value-based and intangible knowledge and education, which is traveling from, even your body will disappear, but the knowledge will travel with you. Okay. Ramji, एक request. So the India has to install 4 laws, basically. If you look at back the times, the water, salt, education, and communication. Okay. So water, salt, education, and communication are the. थोड़ा slow बोलेंगे आप, बहुत fast बोल रहे हैं. Please थोड़ा. I said four things in India. 4 things in India should be free from all commercial trade. I'm not trying to defund or close the banking system, but I'm going to enhance them and empower them. Today's situation, water. Anywhere people are consuming water or using water, water cannot be bought and sold. Salt. If you remember 1930, Gandhiji, the salt was available for 12 paisa per kg, and East India Company imposed 100% tax on it. There was 25 paisa per kg salt. And off lately, before 20-30 years, salt were never been sold. Salt were kept out of the shop that you can pick up as many as you want. So water, salt, education. Whoever wants to have a knowledge or acquire the some amount of skills or knowledge, that should be taught to that person
through the local administration and the local governance. Education and communication. We are talking to each other. I am sharing my ideas, you are sharing my ideas, but the charges. So the idea is there are whole India today is flooded with plastic bottles and wrappers. So every single empty bottle lying on any part of the common or the government, what do you call local municipal corporations area, it should be taxed $5,000 because most of the bottles and companies and wrappers have come from the American direct investment. So your FDI, foreign direct investment, has to be returning to pick up all this garbage from India, and government should tax them. I see your point now. I see your point. This is the answer to your problem, but I don't know how many people are even empowered to listen to this or try to understand the deeper meanings of my words. No. I think it's a hard one actually. I'll agree with you on this one. And I myself actually I'm trying to. It took me some time. मुझे थोड़ी. Nobody has ocean water evaporated by the sun, and sun converts water into a rain and gives it. No government or any individual has a right to buy and sell that water. राम भाई फिर से आप डिस्टॉर्टेड वॉइस हो गई आपकी और अभी टोटली लॉस्ट इट. I said the water, ocean water is evaporated by the sun and converts into rain and drops. The world's total water body, only 2 to 3% is drinkable water. Nobody has a right to buy and sell the water. So you propose that water should be free? All the bottles and water bottles, mineral waters, or Coke or Pepsi or anything which contains water, you cannot buy and sell water. Anybody buys and sells water should be taxed $5,000 for buying and selling. Okay. So that is for foreign direct investment. I see your point, and they can't make money out of Indian resources. Because water is free, and it okay. I see your point actually, and I don't have an next answer is salt. Salt also equally. Salt is representative of your ancestors' cry towards bringing you up, towards making the children feel and work hard. All the cries what your parents, grandparents, great grandparents, and your generations have done. That drying of a tears converts into salt. So salt also cannot be bought and sold. Yeah, I'm with you actually. Well, so salt is it's a different topic actually on different trades and goods and everything. But I see your this is education. This is an action education. This is a part of education. If you want to transform, water, salt, education, and communication should be free and fair, not commercially tagged. No commercial values should be tagged on this particular entity. It should be free and fair available. This is how it used to be there beyond 1834. Ramji, that's a good point actually. And how would you propose, or what would be your suggestion? Where should we start from? It is now it is trouble for you to accept my ideas. The first is I say and you agree to it. Okay, this is done. And if 135 crore people, common people, forget about bureaucrats, technicians, collectors, forget about them. Common man has to realize that this is a need of the hour, and we want a transformation. This has to be done. You're getting distorted voice again. Actually, ab thoda dheeme bole, please. Okay, is it okay now? Audible? हाँ जी, अब ठीक है. Okay, so I said all these ideas, when I tell you, or it has to be absorbed by a common man. I think we have lost you, Ramji. All right, I'll do the round robin
fashion actually. Vinita, hello. Hello, hi, common man. Hello, how are you? Good, how are you? I'm very well, thank you. I was actually trying to come in and give a perspective on the topic of accent and what people perceive it to be. Sure. And I can switch it anytime. I can speak like this, and I can speak like this. Um, and the reason I wanted to bring this up is because um, I have faced a lot of judgment personally when I speak in a public place or anywhere. And the reason I was happy to come online and share this perspective is because um, the way I perceive the world is we are all a product of our environment, situations, and what kind of exposure or experience we've had in our own personal lives. And that's how we form our mindset and we shape the way we look at world is in a way our own experience reflecting on the world. This whole part about accent. So I'm married to an American, Okay. and the reason I developed an accent is because I talk to him all the time in English. And I married very young, so it's easier to pick up accent at that age, in my early 20s. So that's how I picked it up. Um, and I personally don't judge anybody for their accent, including in India with so many accents, north, south, east, west. I don't judge anybody. I try to look at the people for who they are, or at least in that moment who is presenting to me, rather than their physical appearance or their accent or how they speak. So in terms of mindset and how do you get people to have an open mindset, to me the experience I've had is to expose people to different things. Then that gives a perspective that they have never even imagined, and that could potentially either say, all right, I wouldn't completely shut off my mind to a possibility of XYZ existing, or I could say that, all right, I will or I will not open my mind. But that's a choice individually people can make after having an experience or after having an exposure. Like, people who have never traveled outside of India have a certain perception of the rest of the world, especially the West. But Mm. when they actually go, that's when they realize a lot of things are not as different as we think they are. And yeah, sure, a lot of things are different too. So not that one is better than the other. I'm not trying to compare in terms of a contest, who's number one and who's number two. I'm simply trying to say that there are differences even in the family, in the same family. 5 children, each of them will have their own unique personality and own ups and downs and positives and negatives. So instead of judging each positive and each negative, how about we simply keep an open mind and gear more towards accept what you want and leave the rest. Take the good and leave the rest. Like Yeah. that is my take on it. Bang on, Vanita. I think they get it doesn't matter kiski kya accent hai. That's how they speak. Full stop. I think that's Yeah, the exactly. Like, rather than focusing on how I sound, how about focus on what I'm saying? Mm. I I totally Yeah. agree with you actually. Like why to make it so difficult? क्यों अपने आप के लिए इतना आप बोलते हैं ना कि मुसीबत बना रहे कि आप एफर्ट डाल रहे हैं सोचने के लिए इसकी एक्सेंट क्या है क्या नहीं है. Just keep it simple. Use your valuable time on something much better, something more valuable. I would say. I totally agree with you, Vanita, on that point. Uh, गौरव जी एक मिनट ना विनीता जी को पहले फिनिश करने दीजिए फिर आप पर आपके पास आता हूँ. नहीं, that's all. मुझे और कुछ नहीं कहना था. Okay. Thank you very much, Vinita, for joining us, and I would love to see you again. Actually, and next week I'll do another session. Would like your valuable opinion on it. We'll see. If I have an opinion, I come and share. If I don't have an opinion, I just quietly listen. So we'll Definitely. see how it goes. Respect. Thank you. Thanks.
हाँ जी गौरव जी, हाँ जी, जय श्री राम. जय श्री राम जी. So, what I would like to say on the issue of accent. Okay, so नहीं I have already written गौरव जी, accent. नहीं गौरव जी, देयर इज नो इश्यू ऑफ एक्सेंट, दिस इज माइंडसेट एक्चुअली कि जब अलग अलग एक्सेंट में लोग बात करते हैं तो हमारा जो सोच है, नजरिया है, जो कैसे हमारा इवॉल्व होता है, क्या वो अच्छा है, बुरा है, या हमें इनके ऊपर सोचना भी चाहिए. इट्स ऑल अबाउट दैट. Okay, let me try to answer. Let me try to answer by expressing my opinions. Sure. See, when we hear somebody's accent, okay, and if you are asking what is the problem with the accent, so in my opinion, first problem may be that I am not comfortable with that accent. See, if I am accustomed to American accent, and a person in front of me is talking in British accent, so I may have some problem in understanding I see what you mean. what he is wanting to say. So in that case, I can ask that person either to speak a bit slowly. I need not disrespect his or her accent. I can easily say, sir, I am not accustomed to this accent, sir or madam. I will request you to speak a bit slowly so that I can understand you properly. Okay. गौरव जी, एक सेकेंड, आपको मैं, आपने अभी सर और मैडम का, आप शायद लेट ज्वाइन किए. अगर आप शुरू से वीडियो देखते थे तो मैंने सर और मैडम ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा बाद में आके जाके रिवाइंड करके फिर से देखिए. कैरी ऑन प्लीज. Yes, you are true. I joined late. Yes, that's true. कोई बात नहीं. सर और मैडम पर भी डिस्कशन करना है क्या? मैं कर लिया ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा बाद में. कैरी ऑन, आप एक्सेंट पे कह रहे थे. Okay, so that is the first problem. Okay, if see something is called neutral accent. So it is not everybody's cup of tea to have a command on neutral accent. If somebody is living in south means in Kerala, in Tamil Nadu, in Bangalore, he is born and brought up in that environment, he will learn that South Tamil accent. Tamil accent means for English. Okay, and if somebody is living in Bihar, he will speak English in a different accent. In a Bihari English accent, yeah. So that is natural. So, but the problem, first problem, in my opinion, is that I am not able to understand properly. So in that case, I can say with respect that we should speak a bit in a slow manner. I am not able to understand. That is the first part. देखिए गौरव जी, आपने जो फर्स्ट पार्ट किया, कवर किया ना, आपने बहुत अच्छा किया. एंड मैं आपको बता दूं कि आप एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप कम्युनिकेट करना चाहते हो. इसलिए आप कह रहे हो कि आप जरा धीमे बात करेंगे, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो पोलाइटली, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है उस बंदे में या उस पर्सन में बात करने के लिए, तो आप कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो. इश्यू मैंने जो रेज किया था पहले एक्सेंट के थ्रू, वहां से ये एक्सेंट ली है माइंडसेट के थ्रू, कि ये दो ग्रुप है एक्चुअली. कि एक तो है कि हम जमाने से बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के पहले हमें विरासत में मिल चुकी है अंग्रेजी, तो हम पॉश एक्सेंट है, सो वी आर पॉश. ये दूसरा ग्रुप आता है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि चलो बिहार के एक्सेंट ही लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये भी अंग्रेजी ही कह रहे हैं, ये भी इंग्लिश ही बोल रहे हैं, बट दे आर नॉट गुड इनफ. They are not good enough at all, why? Because we got a much better accent, so we are much better than you. ये ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कि ये कहां से ये माइंडसेट पैदा हुआ, और what makes them so better? Are they really that better? I don't see a point over there at all. क्या और better भी तो what? For what? You see the point? Just for speaking one language? इंडिया में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं. ये यहां से हमने एक्सेंट कवर की थी. और एग्जैक्टली तो जैसे कि विनीता जी, हेमा जी, हम बात कह रहे थे
there is nothing wrong in speaking different accent. जो जहाँ पे आपने यही बात कही है, there's nothing. हम जल्दी क्यों करते हैं किसी को? Just keep it simple. ना? Use your energy something much more valuable. Okay? Carry on कीजिए. Okay. Yes. What I was talking is not that you are talking. I was talking something different. Yeah, अच्छा. Now because you. our perspective was about the judgmental and making a conclusion about somebody just because you heard an accent. What you're saying is the ability to understand the other person. I Because in your that the whole bottom line of this, if you boil it down, it comes to intention. When you hear somebody, what is the intention in your mind when you're replying back, or how you're looking at them? If you're looking at them with the intention of, hey, I really want to understand you, मैं आपको समझना चाहती हूँ, बस मुझे ठीक से मुझे आदत नहीं है आपकी तरह भाषा सुनने की, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ जरा धीरे बात कीजिए या थोड़ा हल्के से बात कीजिए, क्योंकि मेरा इंटेंशन यही है, मेरी पूरी तरफ से मैं आपको सिर्फ समझना चाहती हूँ, आपको मैं जज नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक बकेट में नहीं डाल रही हूँ कि ये तो ऐसा ही होगा। लाइक मैं जब भी इंडिया जाती हूँ एंड इफ आई स्पीक इन इंग्लिश, एंड मैं तो चेंज करती रहती हूँ, लाइक अगर मैं इंडिया में जाती हूँ तो मैं वापस इंडियन इंग्लिश की तरह बात करने की कोशिश करती हूँ, बट इट साउंड्स वियर्ड बिकॉज आई एम नाउ यूज्ड टू स्पीकिंग इन अमेरिकन एक्सेंट or whatever, my half Indian half American accent, and because of that काफी सारे लोग ये आ गई विलायती, इसको ये आ गई विलायती, ये इधर उधर पता नहीं, इसको पता नहीं कहाँ कौन से झाड़ पे बैठी है, ये बात पे हम लोग कह रहे थे कि इंटेंशन पे फर्क पड़ता है, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन। और मैं वो लोग जब मुझे ऐसा कहते हैं या मेरे पीठ पीछे ऐसे बात करते हैं, मुझे तो एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई जस्ट सिंपली पुट देम इन कि इनका एक्सपोजर ही इतना रहा है, दैट इज देयर वर्ल्ड, दैट इज ऑल दे हैव सीन एंड अंडरस्टूड। जब इनका एक्सपोजर बढ़ेगा दुनिया की तरफ, या कॉन्सेप्ट्स या थियोरीज या डिफरेंट थिंग्स, दे विल नॉट थिंक दिस वे, मे बी, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल चॉइस। और मुझे इस चीज का गुस्सा या मुझे इस चीज से बुरा लगना ऐसा कुछ नहीं होता, मैं यही पर्सपेक्टिव के बारे में कह रही थी कि इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, कि आप क्या, अभी आपका एक पर्सपेक्टिव ये आया कि मैं समझना चाहता हूँ, बट देयर इज अनदर साइड कि आप समझने के बाद एक बार आपको समझ गया ये इंसान क्या कह रहे हैं, आप क्या, व्हाट डू यू डू नेक्स्ट? Okay. I understood. Yeah, there's two dimensions to it. हम एक dimension के बारे में बात कर रहे थे. And to the gentleman who came before me, I'm sorry I didn't get his name, but जहाँ सवाल है कि water, salt has to be free, that's a very good point. That's a very brilliant point. It's a very, very good point. However, I need to bring in another dimension to it. So if you're considering that you really cannot trade natural resources because that was sent by nature to the entire world and it's for us to consume, right? If we're going to go by that, then the concept of money is in question in the first place. Concept of currency, like money as a way of exchange to have things in our life, that in itself you have to question it, because every single thing that we have is coming from some sort of natural resource. It is not just like, it is not just the drinkable water and water going in soda or iced tea or juices and whatever that we perceive to have come from the West. I'm simply saying that even different products that we use that are not showing water in it has used hydraulic energy to bring it to our table. So like you have to think about it from a larger perspective first, in my opinion, and then concept of money itself will be in question कि हमको पैसे की जरूरत है क्या, हम पैसे के बिना रह सकते हैं सिर्फ इंसान एक planet पे who go on the basis of mutual understanding and camaraderie, जैसे barter system हुआ करता था, मेरे पास ये है तुम ले लो, तुम्हारे पास ये मैं ये लेते, like you have to question everything. Then हम piecemeal में question नहीं कर सकते, या piecemeal solution चलेगा भी नहीं. That is my opinion on it. It's a good one, I agree. See, now my perspective, earlier I had a different opinion and perspective. After what you explained, and which is some good point. Now my perspective is again changed. Actually, it's evolved.
more than evolved and changed. Carry on. Yeah. Yeah, sure, Gaurav. Go on. Yeah. At this point, I am agree with the Miss Vinita, I think. Yes, that's right. Okay. Yes, Vinita, madam. Okay, sorry. Please, Common man. madam, नहीं बोलिए, सिर्फ विनीता बोलिए, please. Okay, okay. Sorry, sorry. I have broken the rules of your game. It's all right. Okay. Okay, Miss Vinita. Uh, I just wanted to say that at whatever you said in a different perspective, and in that perspective, I agree with you, because when there is a difference between the water coming from the nature and the drinkable water. So when we uses some labor, some resources, some material, or some money in making that water drinkable, so you will have to pay some cost for that. That is one point. Exactly. Yes, that is one point. I agree with you, but I will disagree with you if you say that water will be charged heavily, because water is a basic need and it is the fundamental right of every citizen. So the cost should be minimal. The cost should not be very heavy. Even if it should not be free. Here I am agree with you. It should have some cost, because then only the people will value it. But the cost should not be that much high that people are dying. See, I Because of lack of fundamentally water. agree. I fundamentally agree that water, drinkable water, especially because it's for survival, right? It should be free. I 100% agree with you. It is. No, sorry, Vinita. I did not say it should be free. I did not say. Well, I I'm said saying it should be free. Why not free? Like, I said there should be minimal cost. fine. Minimal Okay, minimal cost. minimal Okay, but price. let's peel this onion. Okay, let's say we want to implement this free. Chalo, yeah, minimal cost. Chalo, karte hain. How? Where will you start? Right? So you have how many people in the world? 7 billion, 8 billion people in the world. 8 billion people all need to have clean, drinkable water. Correct? Now, Earth in itself is, it's not, water is drinkable water as such, resources are not equally distributed everywhere, right? Yes. There are some parts of the world that have more and some have less. It depends which side of the planet you are in, right? So that means what? The places that have excess should be willing to give it to the places that are not having enough water because of drought, because of desert like environment, right? So what, how do you do that? You have to transport it from point A to point B. Transportation comes with what? Like, how is the transportation happening? It is using another natural resource like fossil fuels, like petrol, like diesel, right? And that means what? That extraction of petrol and diesel didn't happen for free. So when all of the cost you start to add up to make this happen itself, is somebody has to bear that cost. Because again, money, that's why I said question the concept of money in the first place. Like, we all work and we all get a salary, right? When a businessman is doing a business, he is doing it for profit. He's not doing it for just keep spending money. So the concept of money itself comes in question. Then all of these solutions will only work if you go from the basic. You can't start in step 10. Step 1 was the concept of money. We all need money to survive today. That's the reality. Okay. Yep. Totally agree with See, that, actually. I never said it should be free. First of all, even I'm did saying I say minimum cost. I'm simply saying minimum cost. What is minimum to you may not be minimum to me. You may think Yeah, 10 rupees is nothing. This there is you are why right. I'm saying money is a relative concept. It depends on which side of the coin you are in. Okay. Yeah, for water I Let me said. add something.
Okay. Okay, Let me please add speak. something, Gaurav. देखिए कि क्या है कि बात पानी पर आ रही है, ठीक है? बाद में पानी को लेके क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, ठीक है? एक 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 है कि पानी फ्री होना चाहिए और एक है कि पानी नहीं फ्री होना चाहिए, ठीक है? मगर पानी को ऑलरेडी हम At least, लोग पैसा sorry, कर sorry. देते हैं, I जिससे am interjecting you. Sorry, I never said it should be free. So don't make it free versus non-free. Common man, नहीं, नहीं, I request you. नहीं, आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ, ठीक है? आप नहीं कह रहे हो, ठीक है? मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ। देखिए, अगर कहाँ से शुरू हो रही है कि पानी पे हम पैसा क्यों दें, ठीक है? तो जो जेंटलमैन पहले आए थे, वहाँ से मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, आपसे नहीं कैरी ऑन कर रहा हूँ। मेरा ये सोचना, मेरा ओपिनियन ये है कि पानी का तो ऑलरेडी हम लोग पैसा देते हैं, तो जिस चीज़ का हम लोग ऑलरेडी पैसा देते हैं, उसका फिर से हम लोग पैसा क्यों दें? ये भी एक पॉइंट है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ यूके में आपको एक बात बताता हूँ, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ यूरोप। यूके में इफ यू गो आउट इन अ रेस्टोरेंट or you go into clubs, bars, or wherever, etc., you go, you can clearly say that I don't want to pay for water because we are already paying for it, and that's totally fine. वो क्या करते हैं, आपको जैसे आप पानी मांगते हो ना, आपको बोलते हैं पानी की बोतल बेचने की कोशिश करते हैं, which is also wrong. ये बहुत बड़ा मुद्दा है एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है गौरव जी? पर ये भी एक इश्यू है। तो जिस चीज का ऑलरेडी हम लोग पैसा दे चुके हैं, उसका हम लोग फिर से पैसा क्यों दें? ये भी एक सवाल उठता है, ठीक है? Vinita, are you still there? Yes, I am. Okay. No, I was just like, I didn't want to interrupt. I was waiting till, you're done and Gaurav is done making his point. The So in the sense of चुपके से ऐसे ही ऐसे ही बिल में ऐड कर देना कि आपने 2 कप पानी पिया तो लो उसका इतना पाउंड्स चार्जेस, दैट्स जस्ट wrong. I mean, I don't agree with that kind of a business mindset. And I don't know if that's what you mean it happens in the UK or not. I know that in the US we don't have to, अगर like आपके टेबल पे आके उन्होंने पानी रखा है, they don't charge for it separately. Like you don't get charged for like a cup of water. But No, if you get bottled water, that's a different thing. Like if you're asking for a specific kind of bottled water, that's going to cost money. no, Vinita. What in UK, the issue over here is that they encourage you by not. If they put water, that's fine, but otherwise they'll encourage you. Yes, which water would you like? A small one, or you would like a big bottle of water? You see, they'll immediately encourage you to purchase it. That is the issue, and where people are really pissed off about it. You see, that we have already paid for water. Why should we pay it again? Actually, you see, I that is see another what you mean. issue actually on it. But what we are saying is, what the problem over here is that you are actually indirectly or without a consent, you're already trying to sell a product. If I'm come over here, water is a basic need, you see. Yeah. And especially in clubs and bars, and if you ask for a glass of water, they tell you off that you need to buy that. And if you ask them, politely why I should buy it, actually, well, because we don't have any water which is drinkable, etc., which is like a poor excuse actually. Yeah, I'll have to think about this a little bit more. I don't want to say Hard one. something without I'm thinking sorry, about actually, it. Yeah. yeah, the whole conversation, the topic is going to go different ways Exactly. actually. Yeah. Yeah. So it's So again like this audience is mostly Indian, in India and also in India. So I don't know if they'll be able to relate to the issues we have seen in the West, in the sense of water and restaurants. So that's all I had to say, and I'm probably gonna get off now. And good luck to you, common man. thank And you. hope your episodes continue. These are good Very wider much. discussions. Thank you for thank you for joining us. You're welcome. Bye. Yeah, thank you. Bye. हाँ गौरव जी, एक सेकेंड ना गौरव जी, जरा मुझे एक सेकेंड दीजिए।
हाँ बोलिए गौरव जी, कैरी ऑन. I have just seen the private chats and I got very. I'm taking care of it. गिरजा जी या RNS जरा आप प्राइवेट चैट में कोई इस बंदे का कोई इस पर्सन का कोई नाम है ही नहीं. अब जरा इस पे थोड़ा देखेंगे. और वैसे भी हमें दो घंटे 29 मिनट पहुंचेंगे, जो गौरव के बाद हम वाइंड अप कर लेते हैं यहाँ पर. So if the audience is not happy with me, then I don't have any intentions to make somebody troubled. गौरव जी देखिए, ऑडियंस हैप्पी है या नहीं है ये उनका इशू है. आपको ओपिनियन है, आप ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, सबका ओपिनियन होता है. ऑडियंस में भी लोगों का ओपिनियन होता है, दैट्स ओके. सबका ओपिनियन होता है. यहाँ पर दिस इज जस्ट अ कन्वर्सेशन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पीपल्स माइंडसेट एंड हाउ इट इज. Not a personal attack or anything. Take it easy. But that there is no name appearing there. Who is saying that? At one point of time, I thought that you are expressing those opinions because the last message was yours. Yeah. So I was very shocked. नहीं गौरव जी, ये देखिए, ये this is me actually. That is me. और ये जो है जिसका किसका भी नाम है, I'm afraid I don't know, but I would request कि एक काम करते हैं गौरव जी, आज के लिए हम यहाँ पर ही खत्म करते हैं, अगर आपके पास कुछ है नहीं तो और ऐड करने के लिए. ओके. और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत वैल्यूबल, क्वेश्चंस बहुत अच्छे आपके, बहुत अच्छे हैं, और प्लीज ज्वाइन अगेन एक्चुअली, सो वी कैन हैव मच बेटर कन्वर्सेशन एंड शेयर आवर ओपिनियंस एंड व्यूज. ओके. थैंक यू वेरी मच गौरव जी. अगेन, जय श्री राम. Jai Shri Ram. Okay. With this only, Girija ji, I think we are going to wrap up. I think so. And someone is in the private chat. I just came for that only. It was a wonderful conversation. And Gaurav ji also, everybody contributed. And we welcome participants, nothing like that. So when we are wrapping up for the day, a lot of gratitude for all the beautiful, relevant topics that you raised. And participation was also quite good. Thank you so much. Yeah. You can wrap it up. Yes. Or I'm just going to wrap it up. देखिए, आज का सेशन यही था कि हमारी जो सोच समझ है वो हम कैसे इवॉल्व करें. जो हमें विरासत में मिली है, ठीक है, सही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, व्हाटएवर एक्सेट्रा, समय के हिसाब से हम कैसे उसे इवॉल्व कर सके. दैट्स व्हाट वाज द होल माइंडसेट. एंड देखिए, अब 2.5 घंटे लग गए, इसे चाहिए तो इसे बहुत बड़ा बना सकते हैं, और बहुत सारे और ऐसे हैं. ठीक है. तो I have just given you something to think about it. आपको सिर्फ सोचने पे मैंने वार्म अप किया है. सोचिए, जो आपके लिए सूट पड़ता है, आपको सही लगता है, कलर लगता है, और प्लीज सर, मैडम, बंद कर दो यार, अच्छा नहीं लगता है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. जय श्री राम. I'll see you guys again. Thank you. Bye bye.